73 विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। तेलंगाना, बंगाल में एक शानदार माहौल खड़ा करने में भी हमें बहुत सफलता प्राप्त हुई है। जम्मू कश्मीर में बीडीसी के इलेक्शन हो या देश भर में हुए स्थानीय इकाई के चुनाव हो, सब में भारतीय जनता पार्टी ने यश प्राप्त किया है। उनके नेतृत्व में बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत 1,30,000 बूथों को मजबूत करने का भी काम किया गया। लोकसभा प्रवास योजना बनाकर हर कार्यकर्ता को लोकसभा प्रवास योजना के अंदर जोड़ा। हर घर तिरंगा को भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने जन जन तक पहुंचाने के साथ ही राष्ट्रभक्ति को और तिरंगा के सम्मान को हर जन के मन में पुनः जागृत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। सेवा ही संगठन और मोदी जी के जन्मदिन को जोड़कर सेवा का पखवाड़ा, ये दोनों कार्यक्रम, सेवा ही संगठन ये कोविड के वक्त कार्यक्रम लिया गया और सेवा पखवाड़ा निरंतर भारतीय जनता पार्टी मनाती है, उनको नीचे तक पहुंचाने में बहुत बड़ी कामयाबी नड्डा जी के नेतृत्व में हुई है। मन की बात को भी जन का कार्यक्रम बनाने में भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने बूथ स्तर पर मन की बात को सुनने का जो कार्यक्रम बनाया, इसको हम नीचे ले गए हैं और देश भर में एक विजय संकल्प सभाएं और अपना बूथ सबसे मजबूत, ये दो अभियान हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में नड्डा जी की भारतीय जनता पार्टी को देन के रूप में जाने जाएंगे। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में 19 से भी ज्यादा बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुन कर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनकर इस देश का नेतृत्व करेंगे। इसका हम सबको भरोसा है। मैं समग्र पार्टी की ओर से श्रीमान नड्डा जी को हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सबकी अनंत शुभकामनाएं श्री नड्डा जी के साथ है। उनके नेतृत्व में पार्टी ने अपना पैठ भी बढ़ाया है, प्रसार भी बढ़ाया है और यश भी प्राप्त किया है। ये तीनों क्षेत्र में नड्डा जी के योगदान को पार्टी आज इसकी अनुमोदना भी करती है और उसको स्वीकारते हुए इनके कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ाती है। धन्यवाद। So, the Union Home Minister and Chief Strategist of the BJP, Amit Shah, addressing the media. This is the second day of the National Executive of the BJP and listing out the achievements and also saying that JP Nadda is going to continue until 2024. Confident that Prime Minister Modi is going to return to power. My colleague Mohit Bhatt joining us with the details. Mohit, JP Nadda, the BJP National President, getting an extension until 2024. This is among the several decisions, including booth strengthening and the strategies that the party has chalked out for 2023 Assembly elections as well as the Lok Sabha elections in 24. Well, as we were discussing earlier also that JP Nadda could get an extension till 2024 elections, given the fact that under his leadership, we have seen that our BJP has completely fared very well in the elections, and that is why it was being expected that he will get an extension till Lok Sabha elections. And we were also discussing this yesterday, and now none other than HM Amit Shah has confirmed that JP Nadda will continue as the BJP president till June 2024. I'll ask my VJ to please show these visuals. So the Home Minister is directly going to the National Executive Meet where the Prime Minister Narendra Modi will be addressing the concluding session of the National Executive Meet. And just before that, we see that how a resolution was being put forward by Defence Minister and the senior BJP leader Rajnath Singh regarding the extension of tenure of JP Nadda as the BJP president, and everybody in the National Executive Meet seconded that and it was accepted by everybody. And now we see that the tenure of JP Nadda has been extended till 2024.
2024. Now, Amit Shah also talked about the achievements of the BJP under the presidentship of JP Nadda. He talked about the Bihar elections, that how exactly BJP had the highest strike rate in the Bihar election. Then he talked about the Maharashtra when the NDA now has the power. He talked about Goa, that it's a hat trick in Goa by the BJP, and this time around for the first time they have formed the government of their own. They do not need any alliance partner. Then he talked about UP, Uttarakhand, Mizoram, Assam, and how exactly BJP is making inroads into the northeast. Now he also talked about that Nadda got the charge of the party during a time when COVID outbreak was at its peak. I mean, when he got the presidentship, after some time we saw that how the COVID outbreak was at its peak, and even despite that, his efforts are being praised by HM Amit Shah, Prime Minister Modi, Defense Minister Rajnath Singh, and every single person over there in the national executive. And if you hear the speech of Amit Shah, he was in all praise of JP Nadda and his leadership, but he also stated that the schemes of Prime Minister Narendra Modi have been implemented on the ground, and the ideas of the BJP have been implemented on the ground by JP Nadda. So he'll get another term. He will be the BJP president till June 2024, and the BJP will go for the Lok Sabha elections in 2024 under the presidentship of JP Nadda. So that's the biggest takeaway from this press conference which has just happened. Now everybody has gone inside, and now the concluding address by the Prime Minister will start soon. So we'll get to know that what exactly PM has to say on JP Nadda's tenure being extended, or what exactly is the mantra that the Prime Minister will be given to the national executive members, because everybody is present in this national executive meet, or including the Chief Minister of the BJP ruled states, Vice Presidents, President, General Secretaries, every who's and who is present in this particular meeting. Back to you. Okay, all right. Mohit, request you to stay on with us. Senior journalist Shekhar Iyer also on the broadcast with us. Mr. Shekhar Iyer, the tenure of JP Nadda has been extended. This means that 2024, when we go into the Lok Sabha elections, it would be JP Nadda who would be heading the BJP at the time. Would you say on expected lines, how is this going to shape out for the BJP? Indeed, it was expected lines, because they didn't want to disturb the arrangement which is already in place. We all know for very well that Mr. Nadda enjoys very good rapport with the Prime Minister and with the Home Minister Amit Shah. The entire organization machinery is directly under him, and all the changes that were made earlier, as soon as he took over, they are in place. So they didn't want any disturbance to the arrangement already that is there, because a new president would have meant new office bearers, big changes in the national executive, reassignment of tasks, and this was too short a time, to have such a big change when the elections, not only to the Lok Sabha elections of 2024, there are also elections to be held for 9 states, because that's the priority before the BJP, and Mr. Nadda would be focusing on that, along with people who have been tasked as in charge for the states. That's why we are seeing a continuity that has a lot to do with the desire of the Prime Minister that the BJP organization under Mr. Nadda and overall supervision of Home Minister Amit Shah should continue till these 9 elections are completed, as well as the Lok Sabha elections of 2024. Okay, all right. So 2024 would be fought under the leadership of JP Nadda. A lot of other decisions have also been made by the party. In fact, just to talk about what was mentioned yesterday as well. Confident that in 2024 it will be Prime Minister Modi. He will return as the Prime Minister of the country. Not just that, crucial decisions also being chalked out for the assembly election. So having JP Nadda at the helm also means that in these states, like you mentioned, these are some of the states where the BJP has been either trying to get inroads, or are states that the BJP is going to try and retain. So it's going to be very crucial. As of now, JP Nadda has been the point person for the leaders from these states, and is going to continue so. Yes, because the biggest challenge for the BJP, actually there are 2 sets of challenge. One is early 2023 and another is the late 2023. When it comes to early 2023, you have the biggest challenge in Karnataka, and then you have a challenge in Tripura also, and along with 3 states in the northeast, that is Meghalaya, Nagaland, which are also there. 2 states. So therefore, the attention is first now particularly on Karnataka. Karnataka is a huge state. There are 224 constituencies, and they have to ensure that somehow the BJP returns to power. We are already hearing Baswaraj Bommai will be the face of the party for the elections, and
Only yesterday we heard the senior most leader from Karnataka, Mr. Yediyurappa, met the Prime Minister. He had a long discussion. And the whole idea is to see that the party puts up a united face and fights in Karnataka. Similarly, in Tripura. Tripura is a smaller state, only 90-member assembly. But the problem there is, they have just, changed the chief minister. They have got a new chief minister. At the same time, we are hearing that the opposition, particularly Congress and left, for the first time, have formally joined hands, posing a new challenge, and they are also trying to attract the new tribal body, which is the Tripura Moth. They want to attract that body into this alliance so that the tribal votes, along with Congress and left, they want to challenge the BJP. That is true. Of course, in Nagaland and Meghalaya, BJP is an alliance with the major parties there. So that is not a bigger thing. I mean, it's not a very big challenge like Karnataka or Tripura. But it is the end of the year. I think the situation for the BJP is quite tough. You have elections in Telangana, then you have elections in Madhya Pradesh, Chhattisgarh, and Rajasthan. Rajasthan and Chhattisgarh already have Congress governments. In Telangana, BJP is trying to emerge as the main opposition party to KCR, so the TRS, or what is now called BRS. So when you look at the challenges, the party decided that it must be done in a very united way, the systematic way. As we heard Amit Shah today, the whole focus is going to be some kind of a dedication from the organizational side, along with focusing on the booth. The booth in every constituency is BJP's, what I would say is one can call it, that is the basis of their entire election management. So it is back to that booth level exercise where they want to energize their cadre to approach the booths, approach voters in those booths, then so that the whole exercise is that the Prime Minister's appeal, that's the biggest thing. BJP knows very well that the Prime Minister is the biggest USP for the party. But in order to maximize that appeal, they don't want a repeat of what happened in Himachal Pradesh. Despite PM's campaign, Congress managed to gain power by less than 1% vote. They don't want a repeat of Himachal. So the party has to put a united face, whether it is Karnataka or Tripura or Madhya Pradesh, Chhattisgarh or Rajasthan. And Telangana, Telangana fight is going to be a much tougher fight because KCR is well established there. But yes, from what we are seeing is in terms of the energy that the BJP is showing is Telangana. That's right. And it's also Telangana is especially important because of Chief Minister KCR, like you mentioned, because KCR has also been trying to bring in a non-BJP, non-Congress alliance. He has also been meeting several of the opposition leaders. Request you to stay on with us. We also have senior journalist Mr. Rajagopalan on the phone line with us. Mr. Rajagopalan, does it surprise you, the decision of the BJP, would you say on expected lines, JP Nadda going to continue as the president in the 2024 polls, and Amit Shah highlighting the achievements of the BJP under JP Nadda? JP Nadda's election is a master stroke of Mr. Narendra Modi's, because whenever Prime Minister Narendra Modi went to states, he says double engine sarkar. Now with the party president Mr. Nadda and the Prime Minister Mr. Narendra Modi. Hello? Yes. Mr. Narendra Modi, hello? Yes, Mr. Rajagopalan, we can hear you. And Mr. Narendra Modi has done extremely best chance of getting. And moreover, the Prime Minister was wanting that. The interesting part is that the government work has not reached the public. That is why a lot of efforts have been made. That is why Mr. Amit Shah also held a press conference and conveyed that. My understanding is Gujarat and Uttar Pradesh, when they got in 2022 under Nadda's leadership, as you are, Look South policy, last Hyderabad General Council meeting was also held in Hyderabad, and they wanted Telangana first, Tamil Nadu next. Therefore, they want to have a footprint all over the country. This is the reason why Mr. Nadda has been given second chance. Okay, all right. So on expected lines, and because of the achievements under JP Nadda, because of the historic victory of the BJP,
under JP Nadda. In fact, interestingly, Amit Shah also mentioned the Northeast push, saying he was the one who led the BJP not just breaching the Northeast. Now, ahead of the elections that are going to be taking place in these regions, is going to be very crucial. So now in 2023, the focus is going to be completely Karnataka, Telangana, as well as the northeastern regions. Mr. Rajagopalan Shekhar Iyer was also just pointing out that, apart from the assembly elections, that's going to set the tone, of course, for the 2024 Lok Sabha elections, especially states like Telangana. More crucial because Telangana, the party smells the power. In Tamil Nadu, it will take some more time, and moreover, alliance is not intact in Tamil Nadu. And second thing, put together, BJP would like to ensure, like Uttar Pradesh, they want to take 80 out of 80. And similarly, in Telangana, they want to take at least 10 seats. So therefore, the losses were made in North India, they can compensate in South India. That is the strategy of the BJP. And second thing, Mr. Amit Shah, who held a press conference, was very vociferous in supporting Mr. Nadda. Therefore, the smooth sailing, and I could also see a smooth sailing of Mr. Nadda and Narendra Modi's relationship for the last 3 years, will also take the party and also the country towards the prosperity in 2024 Lok Sabha elections. Okay, all right. Request you to stay on with us. Let me get a live update from Mohit Bhatt, who's joining us from right outside the BJP executive meet that's taking place. Mohit, the biggest takeaway from the meeting yet is, of course, the extension of JP Nadda's tenure as the BJP national president. But in a short while from now, the concluding address from Prime Minister Modi is also about to begin. Take us through what's happening there. Well, these are the visuals from the venue of the National Executive Meet. You see, as of now, the leaders are going inside. But we are getting to know is that the address of the Prime Minister has already begun, and sometime from now, Prime Minister will leave. Then a press conference will happen, and the details would be given that what exactly Prime Minister has said in his address. But you see, as we were discussing earlier, that the BJP's election machine, no state, how big or small, is BJP doesn't take any elections in an easy way, and that is why we saw that in Hyderabad, Greater Hyderabad municipality elections, we saw the top-notch leadership of the BJP was campaigning for the municipality elections, and result was seen on the ground. BJP won seats over there. Yogi Adityanath, Amit Shah, JP Nadda, they were all campaigning, and the BJP won it. And that is why BJP thinks that the Telangana could be their fort through which they can breach the southern fort, and they can form the government over there. And that is why the last national executive meet happened in Telangana. And then after that, we saw that how a slew of reactions came in from KCR and from the TRS party. They were attacking the BJP. So it seems as of now that the BJP has gained upper hand in Telangana, and they have defeated Congress in terms of the perception also. And as of now, it only seems that the fight is between the BJP and the TRS in Telangana. And if you talk about Karnataka also, yesterday Prime Minister, what we are getting to know, himself held meeting regarding the Karnataka elections. And because we know for a fact that how B.S. Yediyurappa has been shifted to the parliamentary board, now he was also the part of the discussion. CM Bommai was a part of the discussion. Other senior leaders were also the part of the discussion. So PM himself is taking interest in each and every state elections. And if you remember, when Ravi Shankar Prasad was addressing the press conference yesterday regarding the statement that was inaugurating statement that was being made by JP Nadda, he clearly stated that JP Nadda has clearly said that we need to win all the 9 assembly elections. So the BJP is not just focusing on these elections, but BJP is also focusing on around 160 and 170 seats on which they did not perform well. So this is something about the BJP, with the opposition parties as of now are not able to track. The BJP is thinking also about those seats which they have lost. They are working on it. Their karyakartas are on the ground in Telangana, in Karnataka, in West Bengal, everywhere. Their karyakartas are working on the ground. They finish one election and they start campaigning and working for the next elections. And in some time from now, the mantra will be given by the Prime Minister Narendra Modi to the national executive, that what exactly you need to do and how exactly the pro-poor schemes of the government have to reach to the people on the ground. Because Prime Minister Narendra Modi again and again have asked all the MPs, all the MLAs, all the leaders to be in their constituencies and reach out to the people and tell them that these are the specific pro-poor scheme which have been launched by the government, and hence you need to connect with them. So in some time from now, we'll get to know what the PM has said. Okay. And this national executive is very important given the fact it has just come after the Gujarat election,
elections. And yesterday we saw that how huge roadshow was conducted by Prime Minister Narendra Modi, and the BJP wanted to welcome Prime Minister Narendra Modi here in Delhi after his thumping majority win in Gujarat elections. And the BJP knows that PM Modi is their star campaigner, PM Modi is the face, and that is why again and again before the National Executive meet, it was clearly shown that the BJP will be fighting all the elections in the face of Prime Minister Narendra Modi. Now that JP Nadda has also got the extension, we have to wait and watch how exactly BJP will plan for these elections. And in some time from now, Prime Minister Narendra Modi will be giving the mantra to all the National Executive members inside the NDMC convention hall. Back to you. All right. So expressing confidence that the Prime Minister will be back, Narendra Modi will be back as the Prime Minister in 2024. JP Nadda is going to continue as the national president of the party. And also another interesting key takeaway is the governments that the BJP has currently. There's not going to be any change in the chief ministerial face. Remember, in a few of the states, there had been a face change finally just ahead of the elections as well. In Gujarat as well, this was a clarification that the BJP had to give out that Bhupendra Patel is going to continue as the CM. Similarly, in Karnataka as well, Mr. Shekhar Iyer, the BJP saying and making it clear already that it's going to be Bommai who is going to be the CM face of the party going into the elections. This comes at a time when, there are questions being raised on whether there's going to be change or not. How crucial do you think it is for such a decision or such an announcement to be made in the national executive? Because, there have been a lot of speculations on whether there will be any other change. There have been murmurs, a lot of dissent as well within the party. So how far does an announcement like this in the national executive go in ensuring that things smoothen out ahead of the elections? You see, for BJP always believes not doing anything, immediately or some kind of a knee-jerk reaction to, on the basis of events taking place in the state or some kind of a media coverage. Because the choice of Basavaraj Bommai was made when Yediyurappa relinquished office and he had named him as his successor. So continuation of Basavaraj Bommai is a very important message to the supporters of Yediyurappa, particularly the core supporters belonging to the Lingayat community as well, that the BJP believes in the leadership of Basavaraj Bommai, who is constantly in touch with Yediyurappa and as well as other leaders. Because Basavaraj Bommai enjoys a much also Yediyurappa's pick. So it's very crucial. And, at a time like this when there is a lot of anger among the Lingayats as well, this decision coming in, Yediyurappa's man continuing as the Chief Minister of Karnataka as the CM face of the BJP. Request you to stay on with us. We also want to break down some of the details that we have of the first day of the meeting and, bring it for our viewers. On the first day, the BJP passed a political resolution slamming the opposition for running a negative campaign against Prime Minister Modi. Briefing the media on the resolution, the Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said that the opposition ran negative campaigns, including abusive politics, citing different issues raised by the opposition, including the Rafale issue, demonetization, money laundering cases by the Enforcement Directorate, the Central Vista project as well. Sitharaman said that they went up to the Supreme Court and then were negated by the legal response. अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण, जो लोग कभी हमको पूछते थे अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बनाएंगे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कार्यकारिणी आभार प्रकट किया, मंदिर की तिथि भी घोषित कर दिया गया है और जल्द ही भव्य मंदिर देश को समर्पित हो जाएगा. And of course, just weeks ago, Home Minister Amit Shah had also declared that Ram Mandir will be ready by January 1st, 2024. और राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो. 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा. And well, the BJP state presidents where elections are to take place in the coming months will also not be changed. The state presidents where the assembly polls are not scheduled are likely to change in the party leadership. Meanwhile, a reaction also coming in from the Congress party.
Jairam Ramesh tweeting, the BJP has given the country a new phrase, governance of saturation. It is actually governance of indigestion by overindulgence of meaningless slogans and one-liners. My colleague Mohit Bhatt on the broadcast with us. Mohit, as you're getting us these details, the reaction coming in from the Congress party taking a dig at the BJP as it chalks out the plan and the blueprint for the elections. Well, you see, when the BJP was attacking the Congress party regarding the presidential elections in the Congress party, we have seen that since past also, the Congress party has been attacking the BJP, saying that you ask about our presidential elections, but what exactly is the process by which you conduct your elections? The name that is being put forward by the top leadership of the BJP becomes the president. There is no democracy in the BJP. This has been the statement that always comes in from the Congress party, and now that has been the extension of JP Nadda as the BJP president till June 2024, we can expect the reactions coming in from the Congress party on the same line. But you see, Amit Shah in that press conference clearly stated that due to the COVID and due to the other reasons, the membership campaign was not completed and hence the elections could not take place. Now this year, full membership will be completed this year, and next year the elections might take place. But given the fact that how this and the next year is very, very important, we have 9 assembly elections that are scheduled to take place this year, and in next year we have the Lok Sabha elections to take place. The BJP doesn't want that there could be any change in the leadership, and hence they have extended the tenure of JP Nadda as the president. And I'd like to tell you one thing, that I was there when BJP was the single largest party in the Bihar election, when they had the best strike rate, and the result was shifted for 2 days because the final tally did not come out. When the Prime Minister on the second day came out, he clearly appreciated the efforts of JP Nadda. That was perhaps the first time Prime Minister on a public podium after an election was appreciating JP Nadda's leadership in Bihar elections. And again we saw that how in every speech Prime Minister has appreciated the leadership of JP Nadda. So that is why it was being speculated that his tenure, JP Nadda's tenure, could be extended till 2024 election, because PM again and again on various occasions has appreciated the working style of JP Nadda, and we have seen that how JP Nadda is going on the ground. He's interacting with the booth level JP Nadda going to continue as the national president. The states that are going into elections, the state presidents there as well are not going to be changed. Mohit, thank you for getting us these exclusive inputs. Thank you, Mr. Shekhar Iyer, as well for joining us on the broadcast. Slipping into a quick break here, but don't go anywhere. On the other side, we return with more details of a lobby branding Chief Minister Yogi Adityanath anti-Muslim. The Indian American Muslim Council issuing an open letter to the participants as a follow-up. Stay with us. इनकेस आप मिलेनियन वाली जनरेशन से हैं तो आपने शायद वो गाना सुना होगा, देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार। सो कुछ ऐसे अगर आप मूड में हैं तो यहाँ पे ये गिटार की स्ट्रिंग्स टाइप दी गई हैं, एग्जैक्टली स्ट्रिंग्स नहीं है बट ऐसे कुछ मूड में है तो आप इनका इस्तेमाल उस समय जरूर कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि गाड़ी कौन सी है। हाल ही में इसका लॉन्च हुआ था, ये है BYD की Atto 3, और क्या परफॉर्मेंस, क्या रेंज, क्या डिजाइन, क्या फीचर्स BYD अपने इस इलेक्ट्रिक व्हीकल में दे रहा है, उन सभी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में हमेशा की तरह बात करेंगे 3 धांसू और 3 नॉट सो धांसू एलिमेंट्स मुझे क्या लगे इस BYD Atto 3 के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं इस Atto 3 के डिजाइन वाले एस्पेक्ट से। तो फ्रंट में BYD का कहना है ये गाड़ी का डिजाइन जो है ओवरऑल ड्रैगन इंस्पायर्ड है, चाइनीज ब्रांड है, तो कुछ वैसा ही एसेंस BYD कह रही है हमने इस गाड़ी के डिजाइन और स्टाइलिंग में देने की कोशिश करी है।
हालांकि ड्रैगन इंस्पायर्ड तो मुझे फ्रंट ज़्यादा नहीं लग रहा है, बट फिर भी यहाँ पे सेंटर में बड़ा सा BYD का लोगो है, क्रोम का एलिमेंट दिया गया है थ्रू आउट जो जाता है इसके फ्रंट हेडलाइट के ऊपर से सेंटर तक। एंड हेडलाइट जो है क्रिस्टल LED कॉम्बिनेशन लाइट्स यहाँ पर इसमें देखने को मिल रही है। एंड DRL देख रहे हैं, देखने में खूबसूरत ही काफ़ी लग रहा है। इसका फ्रंट जो लाइट का सेक्शन है काफ़ी स्लीक कॉम्पैक्ट इसका हेडलाइट का डिज़ाइन लग रहा है। एंड जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो भी इसके DRL में ही इंटीग्रेटेड हैं, तो यहाँ पे जब इसको टर्न इंडिकेटर ऑन होंगे तो ये DRL टर्न इंडिकेटर का काम भी करेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो फ्रंट में कुछ यहाँ पे इवेंट वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, ऑब्वियस है। एंड इसमें जो है ADAS लेवल 2 के फीचर्स देख सकते हैं आप, यहाँ सेंसर्स वगैरह, रेडार वगैरह यहाँ पे इसमें देखने को मिल रहा है। एंड 360 डिग्री कैमरा यहाँ पर इस BYD की Atto 3 में इधर दिया गया है। साइड प्रोफाइल पे आए तो यहाँ पर जो टायर्स इसमें दिए गए हैं वो हैं 18 इंच के 215 सेक्शन के टायर्स दिए गए हैं। एंड यहाँ पे जो डिज़ाइन है एलॉयस का, ये भी थोड़ा स्पोर्टी स्टाइलिश देखने में जरूर लग रहा है। BYD का हब यहाँ पे सेंटर में दिया गया है व्हील में। एंड ओवरऑल जो यहाँ पे डिज़ाइन है, यहाँ पे क्लैडिंग थ्रू आउट जाती हुई आपको पीछे तक इसमें देखने को मिलेगी। BYD डिज़ाइन की बैजिंग यहाँ दी गई है क्रोम में। यहाँ पे जो है इसका ये चार्जिंग सॉकेट है। एंड इसका जो चार्जिंग सॉकेट है वो आप एक्सटर्नल पावर कहीं आपको देनी है, छोटा मोटा कुछ आपको कॉफ़ी मशीन टाइप, छोटा मोटा फ्रिज आपको यहाँ पे इससे एक्टिवेट करना है, इलेक्ट्रिसिटी देनी है वहाँ पे, तो उसका इस्तेमाल इस तरह से भी करा जा सकता है। तो ये एक ऑप्शन BYD ने इस Atto 3 में दिया है। देन साइड प्रोफाइल में क्रोम का एलिमेंट थ्रू आउट इसके विंडोज़ के आसपास। एंड यहाँ पर थोड़ा ये सिल्वर टच इसके रूफ रेल में इधर देखने को मिल रहा है। डोर हैंडल्स जो हैं बॉडी कलर्ड है। एंड ORVM जो है इसमें जो है हीटेड का भी ऑप्शन दिया गया है, तो हीटेड ORVMs है। एंड ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग के फीचर्स ऑब्वियसली यहाँ देखने को मिलेंगे क्योंकि ADAS लेवल 2 के सेफ्टी फीचर्स इसमें दिए गए हैं। एंड नीचे डोर्स में भी थोड़ा ब्लैक और ये बॉडी कलर कॉम्बिनेशन इसके डोर्स में नीचे देखने को मिल रहा है। साइड से डिज़ाइन में कहूँ बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं लग रहा, बट ओवरऑल देखने में अच्छा ज़रूर लग रहा है। इसके अलावा रियर में आए तो रियर में यहाँ पे थोड़ा स्पॉइलर वाला फील दिया गया है इधर। एंड पियानो ब्लैक और ये बॉडी कलर ब्लू के कॉम्बिनेशन में अच्छा सेक्शन, जो इंटरेस्टिंग सेक्शन इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन मुझे लगता है वो है इसका ये टेल लाइट का डिज़ाइन। जो ये स्ट्रिप जा रही है इसकी टेल लाइट को जोड़ती है अब अमूमन। Hello and welcome and a very good afternoon. You're watching Live Wire and I'm Siddharth Talia. Let's take you through the headlines at the top of this hour at 4 o'clock. In a significant but expected move, the BJP has extended JP Nadda's tenure as the party president until 2024. Amit Shah lauds JP Nadda's role, says that the party won significant polls under his leadership. While the horrific memories of Anjali's case were still fresh in our minds, disturbing visuals of a man being dragged on a bike on the streets of Bengaluru have now emerged. The accused has been arrested. India reacts to Hafiz Saeed's kin, Abdul Makki, being declared a global terrorist by the United Nations Security Council. Welcomes the move, calls it a big win against terror. LG साहब उसी माइंडसेट से आते हैं कि LG साहब के बच्चों को तो मिलनी चाहिए अच्छी शिक्षा, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए. Amid tussle with the Lieutenant Governor over teachers' trip to Finland, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal launches an explosive attack on Mr. Vinay Kumar Saxena, claiming that he's deliberately scuttling the teachers' trip as he's against providing quality education to the poor. BJP invokes its action against Nupur Sharma to dare the JDU and the RJD combine to act against Ram Betas. Nitish Kumar also breaks his silence over the controversy, says that his government respects all religions. Another Hindu temple vandalized in Melbourne in Australia, allegedly by Khalistani supporters. Anti-Hindu and anti-India graffiti smeared on the walls. This less than a week after a similar attack in Mills Park, again in Australia. We have learnt our lesson and we want to live in peace with India. Reeling under intense economic crisis and rocked by massive protests, desperate Pakistan begs India for peace. After Pakistan Prime Minister Shahbaz Sharif admits that they've learnt a lesson, can Pakistan still ever be taken at face value?
After propaganda machine, the Indian American Muslim Council spews venom against Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath as he heads to the World Economic Forum in Davos. UP Minority Affairs Minister hits back, denounces biased remarks, calls statements completely divisive. Times Now accesses full statement given by Daud Ibrahim's nephew to the National Investigation Agency, exposing how Daud Ibrahim is still living and flourishing in a defense area of Karachi. He's even married for a second time, this time to a woman of Pathan origin. Gujarat Multiplex Association writes to Chief Minister Bhupendra Patel requesting security in theatres for the Pathan movie amidst the Besharam Rang controversy. The movie is set to release on the 25th of Jan. Now, as the Uttar Pradesh Chief Minister, Mr. Yogi Adityanath, gets invited to attend the ongoing World Economic Forum in Davos in Switzerland, Indian American Muslim Council, an organization, has issued an open letter to the participants. It brands Yogi Adityanath as a Hindu militant monk, alleging that the Uttar Pradesh Chief Minister is known for sowing hatred, creating division, abusing civilians who are opposing the Citizenship Amendment Act, and also claiming that he's been accused in a 2007 Gorakhpur riot case. The IAMC, based on an unnamed 2022 report, alleged that Yogi is responsible for extrajudicial killings, anti-CAA killings, while targeting religious minorities in India. Not just this, the crime against Muslims, they claim, rose under Yogi Adityanath's government in Uttar Pradesh. Remember, this is the same IAMC which had peddled a narrative to malign and demonize Prime Minister Narendra Modi as well. And not just that, it's also been accused in the past for its bid to malign India on international fora, peddling an Islamophobia narrative and taking an anti-Hindu stance. The opposition has echoed this ban Yogi toolkit, saying that Yogi's image is deteriorating not only within India but outside the country as well, and that his antecedents have shown that he's anti-minority. Nobody can object a sitting chief minister attending a World Economic Forum summit in Davos. Having said that, I would also like to bring to the notice that, it's also a fact that his antecedents of the way he has treated minorities, presided over communal and polarizing kind of atmosphere and communal riots and all, shows what he is. So, but that cannot stop him from attending a economic forum meet in Davos as a chief minister. योगी जी की इमेज सिर्फ देश में नहीं, देश के बाहर भी जो बिगड़ती जा रही है, इस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो हमको चाहिए, किसी भी देश को तरक्की करने के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर इस तरह की छवि सिर्फ देश में नहीं, देश के बाहर भी अगर उत्तर प्रदेश की बनती रही तो इन्वेस्टमेंट आना बहुत मुश्किल हो जाएगा. Indian American Muslim Council has taken exception to the visit of Uttar Pradesh Chief Minister Yogi ji in Davos for the official visit. It seems that the record available with that council is that the Chief Minister of Uttar Pradesh is responsible for growing violence and hatred in the state of Uttar Pradesh and consequently also throughout the country, India, and it is their disapproval of the conduct of the Chief Minister. It is for the Chief Minister of Uttar Pradesh to ignore it or to take cognizance of it. Indian American Muslim Council protesting against Mr. Yogi Adityanath participating in Davos is absolutely uncalled for. He's the Chief Minister of Uttar Pradesh. Why should Indian American Muslim Council definitely should interfere? Because it is a personal Indian matter, and whatever it is, the Muslims of India are capable of handling it. I don't think we need Indian, African or Australian Muslim Council to really intervene and interfere in our internal matters. Yogi Adityanath is Honorable Chief Minister of a state in India, and he is more than welcome to go to promote, protect and propagate his state, and I don't think Indian American Muslim Council should definitely interfere in this internal matters of India.
So the JDS calling out the narrative that the IAMC has tried to propagate, criticizing them. Now the Bharatiya Janata Party has slammed the ban Yogi toolkit as well, saying that fake narratives are now being peddled against the UP Chief Minister. कुछ लोग जानबूझ करके भारत की छवि खराब करने के लिए एक प्रोपेगेंडा के पॉलिटिक्स के तहत देश के कुछ नेताओं को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही एक फेक नैरेटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ पहले चलाया जाता था और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को टारगेट करके एक फेक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे लोग उत्तर प्रदेश आकर के देखें कि कैसे प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र पर आज विकास की योजनाओं में सबको शामिल किया जा रहा है। आज कानून व्यवस्था सुदृढ़ होने का सबसे ज्यादा लाभ अकलियत को मिल रहा है। आज विकास की योजनाओं का सर्वाधिक लाभ आज मुसलमानों को मिल रहा है। ऐसे में ये फेक नैरेटिव जमीन पर असर नहीं करते। देखिए, योगी आदित्यनाथ देश प्रेमी हैं और अखंड भारत की परिकल्पना में काम कर रहे हैं। माननीय मोदी जी ने जो एजेंडा दिया है विश्व गुरु का, जगत गुरु का, और ऐसे ही इसी माध्यम से कुछ ऐसे लोग एक तरीके से फरिश्ते टाइप लोग हैं, उनमें योगी जी को गिना जाएगा। मोदी जी के सपनों को पूरा करने के लिए देश की एकता और अखंडता में देश को जगत गुरु बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने की श्रेणी में योगी जी एक श्रृंखला होंगे। Well, let me go across to Amir Haq, who's been tracking all these developments. Amir, the letter that's been put out and the appeal that's been put out by the IAMC is pretty much a rerun of what Mr. Narendra Modi had to go through while he was Chief Minister of Gujarat, and his visits to the United States and the United Kingdom had been blocked. And here's what the IAMC also says in its letter: refrain from investing in Uttar Pradesh since any kind of investment is likely to shore up Yogi Adityanath's Hindu supremacist regime with its inherent dangers to minorities, Dalits, women and other groups. So therefore, this is quite an insidious appeal going out to all stakeholders to refrain from investing in Uttar Pradesh due to Mr. Adityanath. Well, Siddharth, this is absolutely shameful, and this point where you mentioned that IAMC not just spoke negatively about UP Chief Minister Yogi Adityanath and asked the World Economic Forum not to give him a platform, and also members to desist from promoting him or to interact with him. The fact that this particular outfit is asking people in a sense to not to extend any economic help or not to go ahead for investments in the state of Uttar Pradesh speaks volumes about their intentions, because it is not just to malign Chief Minister Yogi Adityanath's image or the ruling party's image here in Uttar Pradesh or in the rest of India, but it is also to see to it that the investment does not come to Uttar Pradesh, especially in the manner in which over the last several months UP Chief Minister and a number of his cabinet colleagues have been crisscrossing various countries across the world, and also speaking to domestic corporates and businessmen to invest in Uttar Pradesh. This forum clearly wants to belittle their appeals, the manner in which they've been working to get more investments ahead of the Global Investment Summit. This definitely comes across as very, very shameful, and clearly also the manner in which opposition has mounted their arguments on the kind of arguments that have been put forward by this particular forum. It clearly seems that the opposition is also towing the line that has been put forward by Indian American Forum, which has asked for a complete boycott of UP Chief Minister Yogi Adityanath. It completely seems to be a rerun of what has happened with Prime Minister Modi earlier when he was Chief Minister of Gujarat, and also when he was the Prime Ministerial candidate of BJP. A number of similar tirades were actually carried out against him throughout the world and also in India, and this seems to be happening once again as far as Global Investors Summit is concerned, or the kind of imagery that they are trying to project. An insidious attempt to block investments in the state of Uttar Pradesh. That's the agenda of the IAMC in this case. Amir, let's in fact go across to Meghna Deka as well, who has some more details from the contents of this appeal that's gone out from the IAMC. Yes, Meghna.
Yes, absolutely. Let me quote them verbatim so that our viewers have a very clear idea of the kind of insidious allegations, charges which have been leveled against them, and also how it's barely backed by any of the facts. In fact, this is what it says. I'm going to show you right from the beginning. It says, don't legitimize Yogi Adityanath's crimes against humanities. This is coming in from the Indian American Muslim Council. They have called him a Hindu militant monk. That's the kind of sentence, the kind of words which are being used. He said he is known for sowing hatred. It goes on to say several other things like known for sowing division within community, follows violent Hindu supremacist politics. These are the words, these catchwords which we must look at. Siddharth, it says that he abuses civilians, opposing CAA. All of this has not been quantified with any specific data or research, although it says there is some data, some report which is not named from 2022. It also says that violence is mostly to target the religious minorities. Against what's substantiating it? Really nothing, scant little. It also says Yogi Adityanath holds criminal record. All these statements which have been made, it goes on to say he incites violence via hate speech. The reason why there may be political opposition to him, political opposition to his policies, that is all well and good. Everyone in a democracy is also advocated that they have every right to come out and criticize anyone. Okay. But the fact that this is not an Indian organization, as even the JDS has come out and said, don't preach us about what we should do in India, what Indian Muslims should be doing. Indian Muslims will keep whatever required inside. This is absolutely, also Meghna. This is strictly an internal matter, and one also needs to see as to whether or not the IAMC was putting out this appeal at somebody's behest. That is a matter of investigation. Is there a larger conspiracy afoot? That's a pertinent question to ask. Thanks, Meghna, as well as Amir. We're slipping into a short break for the time being, but on the other side, Mehbooba Mufti is now fear-mongering on Joshimath, says that Amarnath in Jammu and Kashmir could be next. We'll cover this after the short break. The smartphone category in India is anyway popular, right? उसमें भी जो 20 से 25 हजार वाले स्मार्टफोन्स हैं वो और भी ज्यादा पॉपुलर हैं। शायद इसीलिए इन्फिनिक्स ने आज अपना 020 स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। I have the smartphone with me right here और इसको आज करेंगे अनबॉक्स। Hi, you're watching Gadget Time. This is me, Pathan, and it's time for me to unbox this device और देखते हैं फोन में आपको क्या-क्या contents दिखाई देंगे। Let's begin. फोन अनबॉक्स हो चुका है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर स्टिकर उतारते हुए मैंने इसे थोड़ा सा गंद मचा दी। यहाँ पे स्टिकर ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, बट इसको क्लीन करेंगे बाद में। अभी बात करेंगे स्मार्टफोन के बारे में। थोड़ा सा मुझे वेट इसका ज्यादा लग रहा है, वो यूज करने के बाद पता चलेगा कि ये कितना कंफर्टेबल है। अदर देन दैट यू गेट 3 कैमराज एट द बैक। इसको आपको मिलेगा स्क्वायरिश कैमरा मॉड्यूल के अंदर। द मेन कैमरा इज 108 मेगापिक्सल और यही इसका यूएसपी है। सिर्फ बैक कैमरास की बात नहीं है बॉस, आपको फ्रंट कैमरा भी बहुत ही धांसू दिखाई दे रहा है। एटलीस्ट ऑन द स्पेक शीट यूज करने पे पता चलेगा कि कितना अच्छा है या नहीं अच्छा है। फ्रंट कैमरा जो इसका है वो आपको मिलता है 60 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर। आपको इसमें दिखाई देगा फुल HD प्लस एमोलेड पैनल। बेजल्स थोड़े से मुझे मोटे दिखाई दे रहे हैं, टॉप और बॉटम वाला स्पेशली। साइड बेजल्स आर स्टिल स्लिम। व्हाट कीप्स दिस स्मार्टफोन अलाइव इज Helio G99 चिपसेट। बैटरी की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 45 वॉट का फास्ट चार्जिंग सिस्टम, विच इज प्रिटी गुड। एट द बॉटम यू ऑल्सो गेट अ 3.5 mm हेडफोन जैक एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आजकल के फोन में ये आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। सो यू डू नॉट हैव टू जस्ट रिलाई ऑन योर वायरलेस ईयरबड्स। आप यहाँ पर अपने वायर्ड हेडफोन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पीकर के साथ आपको मिलता है Type-C पोर्ट, ऊपर की तरफ माइक्रोफोन है, राइट साइड पे आपको मिलता है वॉल्यूम रॉकर और साथ में पावर बटन। लेफ्ट साइड इज प्रीटी क्लीन, लेकिन यहाँ पे आपको मिलता है सिम ट्रे।
सिम इंजेक्टर टूल बॉक्स में आपको मिलता है, वो मैं दिखा चुकी हूँ। यहीं पर सिम ट्रे की बात करते करते मेरी नजर गई है फ्रेम पर, विच इज प्रिटी ग्लॉसी। मेटल तो नहीं है, लेकिन ऐसा फील जरूर दे रहा है दैट इट्स मेटल। बाकी ये था मेरा ओवरऑल लुक एट द स्मार्टफोन। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या आपको ये खरीदना चाहिए एट अराउंड ₹20,000-25,000, क्या ये अच्छा ऑप्शन है या नहीं, उसके लिए यू रियली नीड टू स्टे ट्यून्ड टू गैजेट टाइम्स टू फाइंड आउट इट्स फुल रिव्यू। नाउ यू गाइज नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड टू गैजेट टाइम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। You clever, you make for more. You wanna romance and you can take me to the top. Yeah, I'd like to see you try. I'd like to see you try. Get my hands on you. You're gonna turn black, you're gonna turn blue. Oh, that's some real bad news. It's not me, it's you. हेलो एवरीवन, मैं खड़ा हूँ ऑल न्यू BMW M345 X ड्राइव के बगल में और ये यहाँ पर BMW ने फाइनली इंडिया में लॉन्च कर दी है। क्या डिटेल्स हैं इसके डिजाइन, इसके एक्सटीरियर, इसके इंटीरियर को लेकर, क्या फीचर्स दिए गए हैं, परफॉर्मेंस के आंकड़े क्या है, सभी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो डिजाइन की बात करें इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर, तो फ्रंट में वही स्पोर्टी डिजाइन लैंग्वेज इस M340। Now, the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, has attacked the centre on Joshimath, asking why were no arrangements actually made to prevent what happened. She says that we are facing the same situation in Raniganj in West Bengal and have been fighting with the centre for funds. The same problem by Coal India in Raniganj is what Mamata Banerjee is referring to. She claims that 30,000 people in Raniganj will be affected as a result. She also says that the government should work on war footing in Joshimath. These are the claims being made by Mamata Banerjee. Let's listen in. Situation is very dangerous. It's a very important one. पहले इसको बंदोबस्त क्यों नहीं किया जब इंफॉर्मेशन था? Same situation is going on in Raniganj also. I am telling you, we are fighting with the central government. आज 10 साल से हम लोग फाइट कर रहे हैं। जो रुपया उसको देने का बात था, कोल इंडिया का, वो जो बे होता है ना, जस्ट लाइक अर्थक्वेक, धौस बोलता है जो बंगाल में लैंडस्लाइड हो जाता है, उसमें 20,000 लोग एक साथ में मर जाएगा अगर उसको घर हम नहीं कर देंगे। लेकिन उसमें नहीं करने से कोल इंडिया का वही रानीगंज में सेम प्रॉब्लम विल बी देयर। 30,000 people will be affected. Joshimath also, I think the people are not responsible. It is the duty of the government to take care of the people if there is any disaster. We'll take a very short break for the time being. A lot more lined up for you on the other side. Don't go anywhere. Let's get it started here, you know it's game time. Ain't no excuses tolerated while you can't grind. It's like you're on the job, you know that team. Hello everyone, ये है बजाज की नई पल्सर P150। इन केस यू वंडरिंग, 150 ऑलरेडी मौजूद है, तो इस P वर्जन को लाने का कारण क्या है, मतलब क्या है? सो कारण बहुत सारे हैं, डिजाइन को लेकर, फीचर्स को लेकर और कुछ हद तक परफॉर्मेंस को लेकर भी इस P वर्जन में बदलाव देखने को मिलते हैं। तो क्या है वो सारे बदलाव इस नई पल्सर P150 में, उन सभी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं इस रिव्यू के अंदर। और रिव्यू के एंड में बात करेंगे 3 धांसू और 3 नॉट धांसू एलिमेंट्स मुझे क्या लगते हैं इस बजाज पल्सर P150 के बारे में। अब डिजाइन की बात करें तो यहां पर
जो नयापन देखने को मिल रहा है, स्पेशली ओवरऑल 150 जो पल्सर है उसके मुकाबले इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन पूरी आपको ये P150 तक देखने को मिलेगी, लेकिन आपको ओवरऑल जो एसेंस है डिज़ाइन का वो इसमें N160 वाला देखने को मिलने वाला है। फ्रंट हालांकि अलग है यहाँ पे, लेकिन अब इसमें P150 में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं एंड इसमें DRLs भी यहाँ पर इसमें देखने को मिलते हैं। अग्रेसिव, स्पोर्टी एंड शार्प एलिमेंट्स इसके डिज़ाइन में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं एंड साइड प्रोफाइल जो ओवरऑल है वो आपको N160 वाला ही झलक थ्रू आउट इसके साइड प्रोफाइल में देखने को मिलने वाला है। टैंक से लेकर इसके रियर पैनल्स यहाँ तक जो जाते हैं तो ओवरऑल वो लुक कुछ वैसा ही है, लेकिन अग्रेसिव और शार्प काफ़ी ये इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन पहले के मुकाबले लग रही है। देन पल्सर की बड़ी सी ब्रांडिंग यहाँ दी गई है एंड यहाँ काउल अलग से देखने को मिल रहा है टैंक पे एंड देयर इज बेली पैन जो यहाँ पे नीचे दिया गया है, जो बॉडी कलर के हिसाब से दिया गया है एंड P150 की ब्रांडिंग यहाँ पर इसमें देखने को मिल रही है। सीट जो है इसमें स्प्लिट सीट्स आती हैं, इसमें दो वेरिएंट हैं SD और TD एंड जो इसका स्टार्टिंग वेरिएंट है SD उसमें सिंगल सीट है, इसमें जो है जो टॉप वेरिएंट है इसका उसमें TD सीट दी गई है। दोनों वेरिएंट में जो अंतर हैं कुछ मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से हैं। एक तो सीट का हो गया, दूसरा ये जो वर्जन है इसमें क्लिप ऑन हैंडल बार्स आते हैं थोड़ा स्पोर्टी स्टांस के लिए, लेकिन जो SD वर्जन है उसमें जो है सिंगल फ्रेम दिया गया है हैंडल बार का, तो वो थोड़ा अपराइट पोजिशनिंग के साथ उसका स्टांस रखा गया है। एंड उसके अलावा जो ब्रेक्स हैं, डिस्क ब्रेक्स हैं, इसमें जो है ड्यूअल डिस्क ब्रेक मिलती हैं एंड दूसरे वेरिएंट में सिंगल डिस्क ब्रेक दी गई है। सिंगल चैनल ABS दोनों ही वेरिएंट में मिलता है, उसमें कोई कटौती नहीं करी गई है एंड ये कुछ चेंजेस यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ बोथ वेरिएंट्स इन दोनों P150 के दोनों वर्जन्स में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रियर में भी टेल लाइट जो है LED इस्तेमाल करी गई है, हालांकि इंडिकेटर्स आगे पीछे हेलोजन बल्ब का इस्तेमाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो स्टांस स्पोर्टी, अग्रेसिव पहले के मुकाबले, पल्सर 150 के मुकाबले यहाँ पर देखने में ज़रूर लग रहा है एंड येस ओवरऑल डिज़ाइन भी पहले से बेहतर ज़रूर इसका देखने में लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक USB चार्जिंग पॉइंट इसमें दिया गया है। हैंडल बार में लेफ्ट साइड में यहाँ पे हाई बीम, लो बीम, पास स्विच, इंडिकेटर एंड हॉर्न स्विच एंड राइट साइड में इंजन किल स्विच, इग्निशन स्विच यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड इस P150 में जो एग्जॉस्ट टेल है वो अंडर बेली दिया गया है, बजाय एक्सपोज एग्जॉस्ट टेल जो होता है उसके बजाय यहाँ पर इसकी अंडर बेली में ये एग्जॉस्ट टेल देखने को मिलता है इस P150 में। एंड जो इसका डिस्प्ले है वो भी पल्सर 150 के मुकाबले अलग यहाँ देखने को मिलने वाला है। एनालॉग प्लस डिजिटल का मिक्सचर यहाँ देखने को मिल रहा है एंड स्पीडोमीटर इसका एनालॉग दिया गया है एंड डिजिटल में जो इन्फॉर्मेशन है गियर इंडिकेटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज, टाइम, टेम्परेचर, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसके डिजिटल कंसोल में देखने को मिल रहा है। ABS की लाइट एंड इंजन लाइट, बैटरी लाइट, साइड स्टैंड इंडिकेटर भी यहाँ पे इसमें दिया गया है। तो ये कुछ मामला यहाँ पे इस बजाज की नई पल्सर P150 के डिजाइन और कुछ फीचर्स में देखने को मिलता है जो पल्सर 150 में देखने को नहीं मिलते हैं। Are you feeling overwhelmed by your finances? Are you tired of living paycheck to paycheck? What does the upcoming budget hold for you? Our team of experts will provide in-depth analysis. The budget should ideally focus on bringing inflation down. What will Budget 2023 offer the common man? Budget 2023 should be pragmatic and forward-looking. For the common man and common woman, the expectation is that there will be some decline in the rate of taxation. Expert opinions and predictions on the budget and its impact on the economy. From taxes to infrastructure, we'll cover it all. Don't miss this opportunity to stay informed and make an informed decision. Budget Day with Times Now on 1st of February 2023. हम चाहते हैं कि आज का जो बजट है, जो बजट 2023-24 का है, वो एक आम शहरी का दोस्त हो, उसमें हर तबके का ख्याल हो। जो एसेंशियल्स है उनमें जो है कमियां जो रेट्स में है वो होनी चाहिए। स्पेशल बजट मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर को, ताकि यहाँ पर जितनी भी मुश्किलात है वो दूर होनी चाहिए। वादी कश्मीर के लिए कुछ खास जो है पैकेज का ऐलान भी करना चाहिए बजट के हवाले से। जो अनएम्प्लॉयमेंट है और जो गरीबी की सतह है उससे लोगों को ऊपर लाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है।
Welcome to Breaking Ground. We're looking at the top 50 headlines at the top of this hour at 5 o'clock. Days after Home Minister Amit Shah declares the date for inauguration for the Bhavya Ram Mandir, BJP lauds Prime Minister Modi for the construction of the Ram Temple at its National Executive meeting. Ahead of the 2024 elections, BJP puts faith in JP Nadda once again. The party extends Mr. Nadda's tenure as BJP president by another year. Shah lauds Nadda's role, says the party won significant polls under his leadership. Amid the BJP's National Executive Meet, Jairam Ramesh launches a scathing attack on the BJP and Prime Minister Modi, calling the BJP a government of meaningless slogans and one-liners. Accusing the opposition of running a negative campaign to damage the Prime Minister personally, the BJP in its political resolution proposed at the two-day National Executive meeting said that the issues were negated by the legal response of the Supreme Court. BJP questions the silence of the top RJD leaders, including Tejaswi Yadav, on Bihar Minister Chandrasekhar. The spokesperson of the party claims that while he has gone scot-free in the name of secularism, Nupur Sharma was made a victim by these left liberal parties. This is the BJP's day. Bihar Chief Minister Nitish Kumar breaks silence over the remarks of his Education Minister's comments on the Ramcharitra-Manas, says that his government respects all religions and advocates freedom for all to practice their faiths. Amid tussle with the Lieutenant Governor over the teacher's trip to Finland, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal launches an explosive attack on the Delhi LG, says that Mr. Vinay Kumar Saxena deliberately scuttled the teacher's trip as he's against providing quality education to the poor. The Delhi Assembly witnesses another stormy day as BJP MLAs were physically evicted from the House today after the Speaker suspended these MLAs. The Speaker justified his action, saying that he can disallow them just like the LG disallows the app. After propaganda machine, the Indian American Muslim Council spewed venom against UP Chief Minister Yogi Adityanath. The UP Minority Affairs Minister is hit back, denouncing biased remarks and calling those statements divisive. A deeper conspiracy to target Hindus in India unravels. After the arrest of 2 terrorists, police now looks out for 4 others, suspecting the involvement of about 8 to 10 in total. A major security breach at Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra in the state of Punjab as a man rushed to offer Mr. Gandhi a hug. While the IG and the police confirms that the incident did indeed take place, Rahul Gandhi calls it just an attempt at a hug. Is another war of words now brewing over Rahul Gandhi's security detail as the Yatra now heads to Jammu and Kashmir. Times now accesses the full statement given by Daud's nephew to the National Investigation Agency, exposing how Daud Ibrahim continues to live in the defense area of Karachi. He is married for a second time as well, a woman of Pathan origin. India has welcomed the decision of the United Nations Security Council and its ISIL and Al-Qaeda Sanctions Committee to list the Lashkar-e-Toiba terrorist Abdul Rahman Makki, who is also the brother-in-law of Hafiz Saeed, as a global terrorist. Makki has occupied various leadership roles in the LET, including raising funds for the organization. As the opposition rushes to slam the luxury cruise Ganga Vilas amid rumors of a snag, the shipping ministry busts fake news, saying that the cruise is not stuck, that the tourists on board simply took a scheduled halt. In a big win for India, the UK Home Secretary, Suella Braverman, clears the extradition of fugitive alleged arms dealer and proclaimed offender Sanjay Bhandari. Will it now be endgame for Mr. Bhandari? Big win for forces in Jammu and Kashmir. 2 Lashkar-e-Toiba terrorists were killed by our braves in an encounter which took place near a court complex in Budgam today. Accused Ashutosh in Delhi's Kanjhawala case has been granted bail by the Rohini court on a bail bond of Rs 50,000 and a surety of the similar amount. The court has asked Ashutosh to not leave the national capital without prior permission. The Allahabad High Court upholds Sultanpur Court's order rejecting Chief Minister Arvind Kejriwal's discharge plea in connection with the 2014 case for allegedly saying that those who believe in Khuda won't be pardoned by Khuda even if they vote for the BJP.
Reeling under an intense economic crisis and desperate in the wake of a wheat shortage as well as electronic shortage, the Pakistan Prime Minister begs for peace with India. Moving on to more news, more developments pertaining to alleged vandalization of Hindu temples in Melbourne in Australia, and this is the second such temple to be vandalized allegedly by Khalistani supporters within a matter of 2 weeks. Uddhav Thackeray camp MLA Nitish Deshmukh reaches the crime branch in relation to the investigations pertaining to him in the state of Maharashtra. After Mehbooba Mufti, now Mamata Banerjee fearmongers over Hindu pilgrimages, invoking Joshimath, saying that Amarnath is going the Joshimath way. This is, of course, a claim that was made by Mamata Banerjee, by Mehbooba Mufti, I beg your pardon. Mamata Banerjee spoke about Raniganj in West Bengal. BJP candidate Anup Gupta wins the Chandigarh mayoral elections by 1 vote. Gupta won the polls with 15 votes against the Aam Aadmi Party's 14. Multiplex Association of Gujarat appeals to Chief Minister Bhupendra Patel and Home Minister Harsh Sanghvi to provide security to the theatres as Shah Rukh Khan's Pathan releases on the 25th of January. An electric pole bends precariously towards an arterial road while another road sinks in India's IT city of Bengaluru. Will the civic apathy now ever end? A Shiva temple crumbled after JCB collision in Sapotara in Karoli. A woman was trapped in the debris and she subsequently was reported dead. Panic grips an Indigo flight after a flyer reportedly opened the emergency door after the plane took off. After checks, the incident reportedly took place on the 10th of December last year. Shocking video emerges of a man being dragged on the streets of Bengaluru by a biker. The biker who crashed into a car tried to flee from the spot, but the driver tried to hold on to him when he began to drag him and run away. Another case slapped against Bihar Education Minister Chandrasekhar for hurting Hindu sentiments. The case has been registered in the Ara Civil Court in Bhojpur district. The Jammu and Kashmir Lieutenant Governor hands over appointment letter to the wife of Puran Krishan Bhattji, who was killed by terrorists in Shopian. The LG also assured all possible help and assistance to the family. After Sachin Pilot takes a subtle dig at the Gehlot government over Rajasthan's paper leak, Chief Minister Ashok Gehlot said that the government will take proper action in this case. Bihar Cooperatives Minister Surendra Yadav blamed the BJP for using the army for reaping political benefits. He also said that India might invade a country in the same sequence. Tamil Nadu Sports Minister Udayanidhi Stalin flagged off the third day of the Jallikattu event in Madurai's Alanganallur. Just days after the metro pillar collapse in Bengaluru, a road is caved in Bengaluru's Mahalakshmi layout due to an underground pipeline work. Unabated cold wave grips parts of northern India as mercury drops to minus 4.5 degrees Celsius in Rajasthan's Sikkim. In a shocking incident, 4 bike-borne robbers looted rupees 5 lakh from a 42-year-old man by shooting his right leg in the national capital. Full dress rehearsals for the Republic Day 2023 parade were held earlier today at Delhi's Kartavya Path, even as the national capital faced a bitter cold winter morning. As North India is in the grip of a cold wave and dense fog continues to hamper visibility and vehicular traffic, 15 trains in the Northern Railway region were delayed as sheets of mist spread over most parts of northern India. A bus travelling from Pune to Latur in Maharashtra met with an accident. The steering rod broke and the bus toppled over a gorge. More than 20 people have been injured and admitted to a local hospital. 17 people were admitted to a hospital in North Paravurur in Ernakulam in Kerala after consuming food from a restaurant in a suspected case of food poisoning. The people were shifted to the hospital for further treatment.
Indian batsman Shreyas Iyer has been ruled out of the 3-match one-day international series against New Zealand due to a back injury and will be heading to the National Cricket Academy in Bengaluru for further assessment and management. Indian hockey player Hardik Singh will undergo an MRI scan in Bhubaneswar as on Sunday's match against England, the midfielder was reportedly helped off the field after having suffered a hamstring injury. Nepalese authorities began returning to the families the bodies of the victims of a flight that crashed on Sunday. The flight plummeted into a gorge while approaching to land at the newly opened Pokhara International Airport in the foothills of the Himalayas, killing at least 70 of the 72 people on board. The International Atomic Energy Agency has established a continuous presence of the nuclear safety and security experts in South Ukraine nuclear power plant. This is the Pivedunokrains power plant in South Ukraine. Russia's Defense Minister Sergei Shoigu visited one of the troops' headquarters in Ukraine. During his visit, Shoigu listened to the reports on the progress of combat missions being undertaken by the Russian armed forces. Ukraine's President Volodymyr Zelensky released his evening video address where he said to date 40 people have died after Russian missiles hit a residential block in the Dnipro area of Ukraine on Saturday. Some 100 Ukrainian troops have arrived at Oklahoma's Fort Sill to begin training on the Patriot missile defense system, getting Kyiv closer to obtaining the long-sought protection against Russia's missile attacks. Police in Florida said 8 people were shot during the Martin Luther King Day event, with one of the victims listed to be in critical condition. India's new ambassador to Saudi Arabia, Dr. Suhail Ijaz Khan, assumed office amid welcoming voices and expectations from many quarters. United Nations Secretary General, Antonio Guterres, called for a probe into the killing of a former Afghan parliamentarian, Mursal Nabizada, who was shot dead in Kabul on Sunday. Good evening and welcome to the special broadcast that we're bringing to you from Vijay Chowk right outside Parliament, and this is Mandate 2024. Even as the political parties, the primary political parties, the BJP's National Executive Day 2 meeting is on, already plans for 2024 are being kicked off. The Congress, of course, on a Bharat Jodo Yatra, but today, very significantly, apart from the resolutions that were adopted, the social and economic resolutions, the most important takeaway is the extension being given to BJP President JP Nadda for 1 more year till June 2024, which means that he will be leading his party into the next Lok Sabha election. Now, this is very, very significant. JP Nadda himself has asked all his party's leaders, while speaking yesterday on day 1, to work towards ensuring the BJP's victory in the 9 states that are headed to elections or scheduled to head to elections. And of course, the schedule of Jammu and Kashmir not yet being announced. But very significantly, we have also seen Amit Shah come out to say that he is confident that the performance in 2024 of the BJP will be better than 2019 due to the contribution of Prime Minister Narendra Modi and JP Nadda. Listen in. कई बार भूतकाल में भी इस प्रकार के अलग अलग मौकों के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया गया। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको सहर्ष हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। So what are the key takeaways from this National Executive meeting? One of the most important aspects is what Finance Minister Nirmala Sitharaman spoke about yesterday, about the negative politics of opposition political parties, because she has come out to say that whether it was Rafale, whether it was demonetization, or several such issues which the opposition ran negative campaigns against the government, ultimately when it was tested in the court of law, in the Supreme Court, all of these were found to be wrong, and therefore those negative campaigns have flopped. The second and the most important factor
factor is the construction of the Ram temple that is in fact going to be inaugurated by next year, January 2024 in Ayodhya. That's something that also is a huge thumbs up as far as the government is concerned and the leadership of Prime Minister Modi is concerned, because this is an issue, as we all know, has been pending for decades. The third and the most important issue is governance of saturation and the politics surrounding it. Already we are seeing sharp retorts coming in from the Congress party on that. And let me quickly take that last point and the other factors across to my colleague Mohit Bhatt, who's been reporting from the National Executive Meeting. Mohit, this entire politics of saturation is a catchphrase that has now, got entangled in politics. We're seeing reactions coming in from Jairam Ramesh, other leaders of the Congress party, because their allegation is that this is a government that is only good at giving taglines, but in terms of actual results or delivery of governance, that is not seen, is the charge coming in from opposition political parties. Quickly take us through the strategy of the BJP that has emerged in the National Executive Meeting and also the political fight that is currently underway. Mohit. Well, Madhav, first of all, I'll show you the visuals around here. What we are getting to know is that Prime Minister has completed his address, and any moment from now, Prime Minister will leave the National Executive. Today is the last day of the National Executive Meet, and we know for a fact that how in every National Executive Meet, a political and an economic resolution is passed. Now, yesterday, Nirmala Sitharaman talked about that what exactly were the main pointers of the political resolution, and in fact, she hit out at the opposition party, specifically the Congress party, saying that there has been a standard campaign by the opposition parties against Prime Minister Narendra Modi. They want to defame Prime Minister Narendra Modi. She talked about Rafale, she talked about Pegasus, she talked about demonetization, saying that all of these issues which are being raised by the opposition did not stand the scrutiny of the law, and the Supreme Court has given their verdict, and in the end, the decisions that were being taken by the government were upheld. So a strong attack coming in by all the BJP leaders, because remember, this National Executive consists of around 300 to 350 top-notch leaders of the BJP, including all the chief ministers, state president and top-notch ministers. BJP President, Prime Minister Narendra Modi said they all in one way condemned the statements that have been coming in by the opposition parties against Prime Minister Narendra Modi and the policies of the government. Now, talking about the economic resolution. When the press conference being addressed by Dharmendra Pradhan, he talked about that how India has come out of the COVID pandemic and how India has fought back in the fight against COVID, and what exactly were the steps that were being taken by the government. What Dharmendra Pradhan exactly said, because while briefing he spoke about the achievements of the government, he also spoke about how in fact India has worked economically during this very difficult period of COVID. Also, of course, thanking the Prime Minister as far as the construction of the Ram Mandir is concerned. Listen to what Dharmendra Pradhan had to say. अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण, जो लोग कभी हमको पूछते थे अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बनाएंगे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कार्यकारिणी आभार प्रकट किया, मंदिर की तिथि भी घोषित कर दिया गया है और जल्द ही भव्य मंदिर देश को समर्पित हो जाएगा। And on the first day, as we were discussing earlier, Finance Minister Nirmala Sitharaman also briefed on the negative politics campaign by opposition political parties, because she had come out to say that various issues, opposition had picked up issues to defame the government, but they did not really cut much ice when it came to the legalities, and certainly, of course, has failed at the doorstep of the Supreme Court. She cited various examples of Rafale. She cited the example of other issues like demonetization, money laundering cases by the Enforcement Directorate, and the Central Vista project to buttress her case. Listen into the Union Finance Minister. So opposition हर बार पर्सनलाइज्ड कैंपेन और बेबुनियाद आरोप चलाते हुए आखिर जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, उनके बात साफ सुथरा हुआ। Let's go across to our guests who are joining us for more on this. With us is Dushyant Nagar. He's a political analyst, senior journalist. Mr. R. Rajgopalan is also with us. Thank you so much, gentlemen, for joining us. Dushyant Nagar, सबसे पहले आपके पास इनका कहना है, बीजेपी का कहना है कि कहीं ना कहीं नेगेटिव कैंपेन रही है ऑपोजिशन की, और जहां तक लीगैलिटी की अगर हम बात करें, चाहे रफाल हो, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे सेंट्रल विस्टा हो, इन सारे इश्यूज पर जब सुप्रीम कोर्ट में गए और काफी पॉलिटिकल लीडर्स ने भी इस तरह के केसेस फाइल किए हैं, कोर्ट में कहीं भी कामयाबी असफलता नहीं मिली आपको, ऐसा क्यों? देखिए, आपको जहां तक न्यायालय की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे रिटायर्ड न्यायमूर्ति हैं
और 3 अन्य बड़े जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, 4 जजों ने देश के सामने आके कहा, देश को बताया, देश को एड्रेस किया, अपनी चिंताएं जाहिर की। तो जुडिशरी का जो हाल है उसमें मेरी कोई टिप्पणी बनती नहीं, देश और दुनिया पूरी तरह से जानती है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, तो एक फेरबदल पीछे बड़ा हो चुका है कैबिनेट में और दूसरा होने जा रहा है। तो वो प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं उनकी सरकार अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। अब नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है तो एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, देश को फिर से भ्रम में डालने का प्रयास। लेकिन गुड गवर्नेंस की ट्रैक रिकॉर्ड लेके जा रहे हैं लोगों के पास 2024 में। कौन सा गुड गवर्नेंस है? आपने जावड़ेकर साहब, रविशंकर प्रसाद, वो कहाँ हैं? पता नहीं, नेपथ्य में चले गए। अभी सुनने में आ रहा है कि वित्त मंत्री महोदया तो बना रही हैं बजट और कामत का और पारिक का। There is no good governance, Mr. Rajgopal. That's his allegation. Your response to him. Your response to him. दुष्यंत नागर साहब को एक चीज पता होना चाहिए, 2024 लिखा है जी साहब, बगल में पार्लियामेंट बन गया, पार्लियामेंट बन गया। गुड गवर्नेंस नहीं है, गुड गवर्नेंस नहीं है। कांग्रेस के लोग जाएंगे, मोदी जी नहीं जाएंगे इसमें। माधव, कांग्रेस इज डिवाइडेड ऑन टू 2 issues. They are unable to cope up with the speed of Mr. Rahul Gandhi. Those who are going with Rahul Gandhi, they not know whether they are tomorrow they will be alive or day after tomorrow. This type of things are negative campaign within the Congress happening. Right. And moreover, Rahul Gandhi is unable to bring all the factions together. Right. Take for instance Rajasthan. What Dushyant Nagar will say? क्या है राजस्थान में सचिन पहले दोनों ठोक रहे हैं, अलग पेज लेके जा रहे हैं। एंड सेकंड थिंग, अपार्ट फ्रॉम दैट राजस्थान की इंटरनल फाइट सी इतनी ज्यादा है, खत्म हो चुका है। आप कैसे बीजेपी को चुनौती 2024 में आप देखते 40 साल का अनुभव है इनका। 2014 से 19 बेटर था, 19 से 24 बेटर होने वाले हैं। कांग्रेस को 25 सीट भी नहीं आएगी, कांग्रेस 25 सीट भी नहीं आएगी। सबसे जरूरी बात यह है, सबसे जरूरी बात है कि इस साल 10 चुनाव होंगे, 9 असेंबली इलेक्शन प्लस जम्मू कश्मीर। अगर कांग्रेस मुक्त भारत की जो बीजेपी के प्रयास हैं, अगर उससे बचना है कांग्रेस को, तो कांग्रेस को परफॉर्मेंस अच्छी देनी पड़ेगी इस बार। और राजस्थान जैसे स्टेट्स और छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स में बहुत बड़े परसेंट चिन्ह बने हुए हैं, ये तो आप भी कहेंगे। हाँ, ये इंटरनल की बात करें, लेकिन कांग्रेस के लिए चुनौती साफ है, बहुत बड़ी चुनौती है। छत्तीसगढ़ में टूटा है, मध्य प्रदेश में टूटा है, बिहार में टूटा है, इधर जोड़ा है, बताओ। हाँ, भारत नहीं जुड़ा है, ये कहना है। जवाब दीजिए। आपने तोड़ के सरकार बनाई, लोकतंत्र के मुंह पे तमाचा मारा। कर्नाटक में आपने लोगों को तोड़ा, पैसे के दम पे तोड़ा, लोकतंत्र के मुंह पे तमाचा मारा। आप कहते हैं कांग्रेस मुक्त करेंगे, अरे पैसा चल रहा है, पैसे का खेल चल रहा है, और ये पैसे का खेल माधव। Let me come to another point. Let me come to another point. Important point that has been made here is the politics or governance of saturation. Now Congress is attacking that, Mr. Rajgopal, and saying that there is no governance of saturation. These are all just taglines. What do you have to say? Why do you speak about that? Congress, where is Congress? It's on सड़क में है. There is no Congress which I saw. It is the principal opposition party. Shankar Daya Sharma, P.V. Narasimha, those days I covered Congress. Right. I have known Congress much well than Dushyant Nagar. Right. The Congress, there is no strength in that. Governance, yes, there is a governance. G20 is happening. How? G20 is happening in India. It is 150 countries are coming. UPA टाइम पर हुआ था क्या? 8 साल में सुना 8 साल में वो नहीं था। मोदी जी की जगह अगर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर होते तो होता ही। 2G घोटाला किया, देश को धोखा दे रहे हैं। 2G घोटाला किया, एकदम घोटाला। न्यायाधीश महोदय ने कहा 5 बैठा रहा, सबूत लेके नहीं आया। ये सिर्फ झूठ बोलने का काम बंद करिए, देश को सच्चाई। Okay, we'll have to leave it there. So the temperature, the mercury, Dushyant Nagar and Mr. Rajgopal, we'll have to end it there because we're out of time. But as the mercury dips to 1.8 in the national capital, it is a freezing evening. But the political temperature continues to remain high, as you can see with this entire debate that's currently underway. The political fight has truly begun. The trumpets have been blown. The mandate 2024 is what is going to be very clearly in focus over the next 16 months in the run-up to the Lok Sabha elections. Thank you so much for joining us, gentlemen, this evening. We're going to move on to some breaking news that's coming in at the moment. And in fact, this is the information coming in at this point of time as far as a disturbing trend of anti-India and anti-Hindu hate. A prominent temple in Melbourne that has been vandalized. In fact, the walls of the Sri Shiva Vishnu temple was smeared with anti-India graffiti. That's the information coming in at this point of time. This vandalization happened in Carrum Downs, about 37 kilometers
from Melbourne's Central Business District. That's the information coming at this point of time. There's a second such case of vandalization of a Hindu temple in Australia within a week. And earlier, in fact, this had happened in Melbourne's Mill Park area at the BAPS Swaminarayan Mandir. Listen to the reactions coming in. The attack on Hindu temple in Australia is extremely condemnable. The hardline Khalistani groups which are spreading hate and doing this kind of vandalism should definitely be condemned, and I hope Australian authorities will take action. Hindus, if you look at a global level, are not a majority but more of a minority. It will transform into racism, it will transform into Hindu phobia, and India should actively resist. It's shocking that the Hindu temple has been vandalized by certain Khalistani radical elements in Australia. This is happening second time in recent past. We'll appreciate that the Indian government should immediately take up the matter with the Australian government, and the Australian government should immediately act on all such elements who are trying to radicalize the society. And if they think that they can achieve a target of Khalistan, they are hugely mistaken. In India, no one wants Khalistan, no Sikh want Khalistan. There's only certain elements who are abroad, who are sponsored and funded by ISI. They keep doing such activities. Slipping into a very quick break, the news continues on the other side. Stay tuned. इन केस आप मिलेनियन वाली जनरेशन से हैं तो आपने शायद वो गाना सुना होगा, देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार। सो कुछ ऐसे अगर आप मूड में हैं तो यहाँ पे ये गिटार की स्ट्रिंग्स टाइप दी गई हैं, एग्जैक्टली स्ट्रिंग्स नहीं है बट ऐसे कुछ मूड में है तो आप इनका इस्तेमाल उस समय जरूर कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि गाड़ी कौन सी है। हाल ही में इसका लॉन्च हुआ था, ये है BYD की Atto 3 और क्या परफॉर्मेंस, क्या रेंज, क्या डिजाइन, क्या फीचर्स BYD अपने इस इलेक्ट्रिक व्हीकल में दे रहा है, उन सभी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में हमेशा की तरह बात करेंगे 3 धांसू और 3 नॉट धांसू एलिमेंट्स मुझे क्या लगे इस BYD Atto 3 के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं इस Atto 3 के डिजाइन वाले एस्पेक्ट से। तो फ्रंट में BYD का कहना है ये गाड़ी का डिजाइन जो है ओवरऑल ड्रैगन इंस्पायर्ड है, चाइनीज ब्रांड है, तो कुछ वैसा ही एसेंस BYD कह रही है हमने इस गाड़ी के डिजाइन और स्टाइलिंग में देने की कोशिश करी है। हालांकि ड्रैगन इंस्पायर्ड तो मुझे फ्रंट ज्यादा नहीं लग रहा है, बट फिर भी यहाँ पे सेंटर में बड़ा सा BYD का लोगो है, क्रोम का एलिमेंट दिया गया है थ्रू आउट जो जाता है इसके फ्रंट हेडलाइट के ऊपर से सेंटर तक। एंड हेडलाइट जो है क्रिस्टल LED कॉम्बिनेशन लाइट्स यहाँ पर इसमें देखने को मिल रही हैं। एंड DRL देख रहे हैं, देखने में खूबसूरत ही काफ़ी लग रहा है। इसका फ्रंट जो लाइट का सेक्शन है काफ़ी स्लीक कॉम्पैक्ट इसका हेडलाइट का डिज़ाइन लग रहा है। एंड जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो भी इसके DRL में ही इंटीग्रेटेड हैं। तो यहाँ पे जब इसको टर्न इंडिकेटर ऑन होंगे तो ये DRL टर्न इंडिकेटर का काम भी करेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो फ्रंट में कुछ यहाँ पे इवेंट वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, ऑब्वियस है। एंड इसमें जो है ADAS लेवल 2 के फीचर्स देख सकते हैं आप, यहाँ सेंसर्स वगैरह, रेडार वगैरह यहाँ पे इसमें देखने को मिल रहा है। एंड 360 डिग्री कैमरा यहाँ पर इस BYD की Atto 3 में इधर दिया गया है। साइड प्रोफाइल पे आए तो यहाँ पर जो टायर्स इसमें दिए गए हैं वो हैं 18 इंच के 215 सेक्शन के टायर्स दिए गए हैं। एंड यहाँ पे जो डिज़ाइन है एलॉयस का ये भी थोड़ा स्पोर्टी स्टाइलिश देखने में जरूर लग रहा है। BYD का हब यहाँ पे सेंटर में दिया गया है व्हील में। एंड ओवरऑल जो यहाँ पे डिज़ाइन है, यहाँ पे क्लैडिंग थ्रू आउट जाती हुई आपको पीछे तक इसमें देखने को मिलेगी। BYD डिज़ाइन की बैजिंग यहाँ दी गई है क्रोम में। यहाँ पे जो है इसका ये चार्जिंग सॉकेट है। एंड इसका जो चार्जिंग सॉकेट है वो आप एक्सटर्नल पावर कहीं आपको देनी है, छोटा मोटा कुछ आपको कॉफ़ी मशीन टाइप, छोटा मोटा फ्रिज आपको यहाँ पे इससे एक्टिवेट करना है, इलेक्ट्रिसिटी देनी है वहाँ पे, तो उसका इस्तेमाल इस तरह से भी करा जा सकता है। तो ये एक ऑप्शन BYD ने इस Atto 3 में दिया है। देन साइड प्रोफाइल में क्रोम का एलिमेंट थ्रू आउट इसके विंडोज के आसपास। एंड यहाँ पर थोड़ा ये सिल्वर टच इसके रूफ रेल में इधर देखने को मिल रहा है। डोर हैंडल्स जो हैं बॉडी कलर्ड हैं
एंड ORVM जो है इसमें जो है हीटेड का भी ऑप्शन दिया गया है, तो हीटेड ORVMs हैं एंड ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग के फीचर्स ऑब्वियस यहाँ देखने को मिलेंगे क्योंकि ADAS लेवल 2 के सेफ्टी फीचर्स इसमें दिए गए हैं। एंड नीचे डोर्स में भी थोड़ा ब्लैक और ये बॉडी कलर कॉम्बिनेशन इसके डोर्स में नीचे देखने को मिल रहा है। साइड से डिज़ाइन में कहूँ बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं लग रहा, बट ओवरऑल देखने में अच्छा ज़रूर लग रहा है। इसके अलावा रियर में आए तो रियर में यहाँ पे थोड़ा स्पॉइलर वाला फील दिया गया है इधर, एंड पियानो ब्लैक और ये बॉडी कलर ब्लू के कॉम्बिनेशन में अच्छा सेक्शन, जो इंटरेस्टिंग सेक्शन इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन मुझे लगता है वो है इसका ये टेल लाइट का डिज़ाइन। जो ये स्ट्रिप जा रही है इसकी टेल लाइट की जोड़ती है। अब अमूमन ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों में ये डिज़ाइन एलिमेंट हमें देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे इस BYD Kato 3 में भी ये अच्छा देखने में रियर प्रोफाइल फ्रंट प्रोफाइल के मुकाबले मुझे ज़्यादा बेहतर देखने में ज़रूर लग रहा है। क्रोम का एलिमेंट भी थोड़ा है एंड BYD की फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता है इनकेस, तो इन्होंने बड़ा बड़ा यहाँ लिखा है बिल्ड योर ड्रीम्स। एंड इधर Atto 3 की बैजिंग है एंड लेफ्ट साइड में जाएं तो यहाँ पर इसका EV का बैजिंग इधर दिया गया है। सेंसर्स थ्रू आउट इसमें देखने को मिलेंगे, 360 डिग्री कैमरा यहाँ पे इसमें दिया गया है। एंड बूट को ओपन करने के लिए वन टच एंड बूट ओपन इसका हो जाएगा। ओवरऑल जो स्पेस है अभी फिलहाल सेकंड रो अप है, तो ओवरऑल स्पेस जो है वो है 440 लीटर्स का। Welcome back. Now, the hypocrisy of the Rashtriya Janata Dal has come to light in the state of Bihar following extremely critical comments being made about the Ramcharitramanas by one of the ministers, Mr. Chandrasekhar. Now, can there be different yardsticks for alleged hate mongers, no matter who or which community they might have offended? Is it fair that those who insult Islam be punished, but those who insult the Sanatan Dharm completely get away? Remember how the opposition had frothed and fumed over Nupur Sharma's comments on the Prophet Muhammad. She was sacked from her position, suspended from the BJP and faced a series of FIRs. In fact, some even endorsed calls for Sar Tan se Juda. Now, when the RJD Mantri has insulted the Sanatan Dharm, not only is there no outrage by the so-called secularists, but even the likes of Tejaswi Yadav and others within the party have not rushed to condemn what he said, let alone sack him. They will divide the country, they will spread hatred in the country. हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते जाएंगे। बहुत सारी दुकानें खुल रही हैं मोहब्बत की, तो हम ये अपना काम करते जाएंगे, वो उनका काम करेंगे। हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, हिंदुस्तान का कल्चर है, भाईचारे का है, मोहब्बत का है, जीत मोहब्बत की होगी। मीडिया को कंट्रोल किया जाता है, नफरत फैलाई जाती है और वो फैलाई जाती है, और जो मीडिया डिस्ट्रैक्शन का रोल प्ले कर रहा है। विवाद हो रहा है, जो शिक्षा कहाँ विवाद हो रहा है? सर, आपने शिक्षा मंत्री से पूछेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? इन सब चीजों पर कोई विवाद नहीं करना चाहिए। देखिए, टिप्पा टिप्पणी नहीं करना, वो क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं ये सब लोग जानते हैं कि भाई सत्ता से जब बाहर हुई बीजेपी तो अभी भी उन लोगों को ये बात जो है पच नहीं दी। और हम सब लोग समाजवादी लोग हैं, हम सब लोग मिल कर के हम लोगों की तैयारी है कि 2024 में किस प्रकार से जो है भाजपा को हराएं। और केवल बिहार की बात ही नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी और हम लोग खुद राष्ट्रीय जनता दल मिल कर के लगे हैं कि देश भर में विपक्ष को जो है गोलबंद किया जाए। तो असल घबराहट जो है वो 24 का है। Now, the Bharatiya Janata Party has come out very strongly in its criticism of the comments made by the Bihar Education Minister, Mr. Chandrasekhar. The BJP has drawn a parallel between the action that it had taken against Nupur Sharma following her comments on the Prophet, and contrasting that with the complete inaction that's being seen in the state of Bihar, where there's been absolutely no condemnation, at least so far, over the comments that Mr. Chandrasekhar has made, let alone
postpone him being sacked. Now, Sushil Kumar Modi, who is of course a senior functionary of the BJP in the state of Bihar, has also been a deputy chief minister in Bihar, has dared the RJD to punish their mantri the same way that the Bharatiya Janata Party had come out against Nupur Sharma, suspending her from the party for her comments on Prophet Muhammad. Now remember, Tejashwi Yadav as well as the RJD Bihar chief have backed Mr. Chandrasekhar, and his comments over the last few days, they've been quite defiant. Let's listen in. But before we come to that, of course, strong reactions coming from the BJP. Many would say a pertinent comparison being drawn to the action that the Bharatiya Janata Party had initiated against Nupur Sharma. Remember that Nupur Sharma, among others, including Mr. Jindal, who had made those kind of comments, had been described by the party and eventually the government as fringe elements. Why is there no such action forthcoming against Mr. Chandrasekhar on the part of the RJD or the JDU? That's a question many are asking. Let's listen into these reactions that have come in from within the RJD over the last couple of days. यहाँ नफरत की जमीन पर राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, जहाँ की अब इंसानियत से बड़ा इस भारत में उन्मादियों के अब राम बचेंगे। अब लोगों के, गरीबों के, झोपड़ी वालों के, तुलसी के राम, अयोध्या के राम, सबरी की जूठन बैल खाने वाले राम अब भारत में नहीं, बल्कि पत्थरों के भीतर एक कैद केवल राम रहेंगे, बाकी सब जगह से राम खत्म हो गए। मैं 100% कायम हूँ। संपूर्ण नारी जाति को काट करके जिस ग्रंथ ने रखा है उसके उस छंद का विरोध होना चाहिए। मैं हर समय विरोध में खड़ा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि रामचरितमानस के जो ये छंद है, उत्तरकांड के, सुंदरकांड के जो ये छंद है, वो विरोध के लायक है। मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी मधुबनी के दुर्गा मंदिर में गए पूजा करने, 6 साल हुआ है भाई, मुख्यमंत्री गए और आपने उसको गंगा जल से धो दिया। ये चला है संघर्ष। इसलिए 3000 साल पहले मनुस्मृति के जो ये छंद हैं, जाति के नाम पर अपमान का, इसका विरोध होना चाहिए। रामचरितमानस में जो ये छंद है, उत्तरकांड, सुंदरकांड के, अरण्यकांड के, इसका विरोध होना चाहिए। Let's in fact once again listen in to what the other constituents of the ruling dispensation in the state of Bihar have had to say. Nitish Kumar, of course, being the chief minister of Bihar, but also Rahul Gandhi. Remember, the Congress is also part of that ruling alliance in the state of Bihar. They will divide the country. They will spread hatred in the country. हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते जाएंगे। बहुत सारी दुकानें खुल रही हैं मोहब्बत की, तो हम ये अपना काम करते जाएंगे, वो उनका काम करेंगे। हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, हिंदुस्तान का कल्चर है, भाईचारे का है, मोहब्बत का है, जीत मोहब्बत की होगी। मीडिया को कंट्रोल किया जाता है, मीडिया पे प्रेशर डाला जाता है। जो मीडिया में नफरत फैलाई जाती है और वो फैलाई जाती है, और जो मीडिया डिस्ट्रैक्शन का रोल प्ले कर रहा है। कहाँ भी बात हो? सर, आपने कहा था कि शिक्षा मंत्री से पूछेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। इन सब चीजों पर कोई भी बात नहीं करना चाहिए। Now turning our attention to what's been happening in Pakistan occupied Jammu and Kashmir last few days. Rattled by a Mazboot Bharat and reeling under an intense economic crisis, the Pakistan Prime Minister Shahbaz Sharif has made a candid admission. He says that Pakistan has learnt its lesson. In fact, Mr. Sharif literally begged Prime Minister Modi to sit down and talk with Pakistan. Now, under severe economic duress, the Pakistan Prime Minister, Mr. Sharif, went on to say that 3 wars with India has introduced extra distress, poverty and unemployment in his country. So what's really interesting is that Mr. Sharif has been begging for talks at a time when Pakistan is, of course, facing serious economic problems. There have been widespread protests that have broken out in different parts of the country. Also in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, which is a part of India, over dizzying price rise and hardships. Well, currently there is not a single city in Pakistani-occupied Jammu Kashmir or Pakistani-occupied Gilgit-Baltistan for that matter, where people are not on the streets protesting, whether they are doing sit-ins, public meetings like jalsas or rallies.
People are out on the streets because there is no food, there is no atta, there is no flour. And in POJK, in one day, they have increased the price of a mound of wheat by 1,200 rupees. So people are fed up. So let's also listen in to what some of the protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir have been saying, and these protests have been raging for quite some time. Let's in fact listen in. Now, this is just a glimpse of what's happening not just in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, but different parts of Pakistan as well. Pakistan's weekly inflation has now increased by 30% compared to last year on the back of prices of fuel as well as other essential commodities being hiked by the government. Such is the state of financial distress in Pakistan that the Prime Minister yesterday said that he was embarrassed to ask for any more loans. Now, faced with street protest, Mr. Shahbaz Sharif seems to be begging for peace. It's quite obvious that this desperate situation that Pakistan finds itself in has prompted the country to parrot a certain narrative. We've heard many times in the past that there should be reconciliation with India and that the two sides should in fact begin talking. But let's in fact first listen in to what Mr. Sharif had to say about the prevailing economic situation in his country. यूएई के जो सदर हैं मेरे भाई जनाब मोहम्मद बिन जायद, तो मैंने उनसे कहा कि आपने $2 अरब का जो कर्जा दिया है पाकिस्तान को, मेहरबानी कर उसको रोल ओवर कर दें। और मैंने फैसला किया था कि मज़ीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन किस्मत देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान जिन मसाइब से मुश्किलात से गुजर रहा है, मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मज़ीद कर्जा मांगूं। तो मैंने कहा कि जनाब मेरे आप बड़े भाई हैं और मुझे बड़ी शर्म आ रही, लेकिन मजबूरी है, हमारे मामलात जो माली मामलात जो हैं इस वक्त बड़े IMF की शराइत में हम जकड़े हुए हैं, अभी भी 9th रिव्यू मुकम्मल नहीं हुआ। मैंने कहा कि मसाइल आप जानते हैं, आप मुझे हमें $1 अरब और दे दें। आई फील वेरी एम्बैरेस्ड कि मैं आपसे हर दफ़ा आता हूँ, कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। And it is up to us to live peacefully and progress, or quarrel with each other and waste time and resources. That's up to us. Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars with India, 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, to the unemployment, two nations, poverty, and millions were demoted from their level of satisfaction to a low level of satisfaction. We have learnt our lesson and we want to live in peace with India, provided we are able to resolve our genuine problems. Turning our focus to the city of Bengaluru, which has unfortunately been in the news for quite some time now with issues of civic apathy, but another development where a shocking video of a man being dragged on the streets of Karnataka's capital city by a biker has now emerged. A biker who had crashed into a car had then tried to flee from the spot. The driver of that car tried to hold on to him when he began to drag him and flee. Now, this incident took place from Magadi Road in Bengaluru. The locals there eventually managed to catch hold of the biker and then proceeded to thrash him. Those are the visuals that you see on the left of your screen, where
After a collision with a car and the biker tried to flee from the spot, the driver of the car was left hanging at the back of that particular bike, and then he was dragged along the streets of Bengaluru for an extended period of time. Finally, the biker stopped, and the locals in fact intervened and proceeded to manhandle the biker, who presumably now has been arrested by the police. Here's a report from the ground after the incident took place. We're now standing at the very spot where the shocking incident took place, where the biker dragged the Bengalurian across the stretch of the road, which is at least about a kilometer long. Now, the accident took place at the end of the road where you're looking at, and after which the biker, of course, hit a sumo, Tata Sumo. The driver of the Tata Sumo got down from his car and began to ask him questions. Now, fearing that he would be asked to pay compensation, he tried to flee from that particular spot. That's when he was dragged all across this particular stretch. You can see there are, of course, potholes on this road. The surface is uneven. You can imagine the kind of injuries that he would have sustained. Right now, he was, after that, of course, there was an auto rickshaw driver who finally managed to corner him and, brought his auto rickshaw right in front of his bike here and stop him. Now, a biker, of course, who chased him down also alleges that this particular individual, Sahil, who, of course, dragged this 76-year-old man, Muttappa, all across this particular stretch, refused to stop his bike despite repeated, attempts by the other bikers on the road as well. You can see, the footwear of the victim still here. Now, what is shocking is that, despite knowing that, he was, sustaining injuries, despite knowing that he was clinging on for dear life on his bike, he didn't stop. It just goes on to show the audacity and the insensitivity. At this point in time, the victim, of course, has been hospitalized. The accused is at the nearby police station, and the police are saying that stringent sections will be booked against this individual for this heinous crime. Right, so that was Deepak bringing us that ground report from Bengaluru. We are slipping into a short break. We'll come back with more on the other side. Don't go anywhere. Are you feeling overwhelmed by your finances? Are you tired of living paycheck to paycheck? What does the upcoming budget hold for you? Our team of experts will provide in-depth analysis. The budget should ideally focus on bringing inflation down. What will Budget 2023 offer the common man? Budget 2023 should be pragmatic and forward-looking. For the common man and common woman, the expectation is that there will be some decline in the rate of taxation. Expert opinions and predictions on the budget and its impact on the economy. From taxes to infrastructure, we'll cover it all. Don't miss this opportunity to stay informed and make an informed decision. Budget Day with Times Now on 1st of February 2023. The smartphone category in India is anyway popular, right? उसमें भी जो 20 से 25 हजार वाले स्मार्टफोन्स हैं वो और भी ज्यादा पॉपुलर हैं। शायद इसीलिए Infinix ने आज अपना 020 स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। I have the smartphone with me right here और इसको आज करेंगे अनबॉक्स। Hi, you're watching Gadget Time. This is me, Bihar, and it's time for me to unbox this device और देखते हैं फोन में आपको क्या-क्या contents दिखाई देंगे। Let's begin. अनबॉक्स हो चुका है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर स्टिकर उतारते हुए मैंने इसे थोड़ा सा गंद मचा दी। यहाँ पे स्टिकर ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, बट इसको क्लीन करेंगे बाद में। अभी बात करेंगे स्मार्टफोन के बारे में।
थोड़ा सा मुझे विथ इसका ज्यादा लग रहा है, वो यूज करने के बाद पता चलेगा कि ये कितना कंफर्टेबल है। अदर देन दैट यू गेट 3 कैमराज एट द बैक। इसको आपको मिलेगा स्क्वायरिश कैमरा मॉड्यूल के अंदर। द मेन कैमरा इज 108 मेगापिक्सल और यही इसका यूएसपी है। सिर्फ बैक कैमरास की बात नहीं है बॉस, आपको फ्रंट कैमरा भी बहुत ही धांसू दिखाई दे रहा है, एटलीस्ट ऑन द स्पेक शीट। यूज करने पे पता चलेगा कि कितना अच्छा है या नहीं अच्छा है। फ्रंट कैमरा जो इसका है वो आपको मिलता है 60 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर। आपको इसमें दिखाई देगा फुल HD प्लस एमोलेड पैनल। बेजल्स थोड़े से मुझे मोटे दिखाई दे रहे हैं, टॉप और बॉटम वाला स्पेशली। साइड बेजल्स आर स्टिल स्लिम। व्हाट कीप्स दिस स्मार्टफोन अलाइव इज Helio G99 चिपसेट। बैटरी की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 45 वॉट का फास्ट चार्जिंग सिस्टम विच इज प्रिटी गुड। एट द बॉटम यू ऑल्सो गेट अ 3.5 mm हेडफोन जैक एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि आजकल के फोन में ये आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। सो यू डू नॉट हैव टू जस्ट रिलाई ऑन योर वायरलेस ईयरबड्स। आप यहाँ पर अपने वायर्ड हेडफोन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पीकर के साथ आपको मिलता है Type-C पोर्ट, ऊपर की तरफ माइक्रोफोन है, राइट साइड पे आपको मिलता है वॉल्यूम रॉकर और साथ में पावर बटन। लेफ्ट साइड इज प्रीटी क्लीन, लेकिन यहाँ पे आपको मिलता है सिम ट्रे और सिम इंजेक्टर टूल बॉक्स में आपको मिलता है, वो मैं दिखा चुकी हूँ। यहीं पर सिम ट्रे की बात करते करते मेरी नजर गई है फ्रेम पर विच इज प्रीटी ग्लॉसी। मेटल तो नहीं है लेकिन ऐसा फील जरूर दे रहा है दैट इट्स मेटल। बाकी ये था मेरा ओवरऑल लुक एट द स्मार्टफोन। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या आपको ये खरीदना चाहिए एट अराउंड ₹20,000-25,000, क्या ये अच्छा ऑप्शन है या नहीं, उसके लिए यू रियली नीड टू स्टे ट्यून्ड टू गैजेट टाइम्स टू फाइंड आउट इट्स फुल रिव्यू। नाउ यू गाइज नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड टू गैजेट टाइम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। You clever, you make for more. You want romance and you can take me to the top. Yeah, I'd like to see you try. I'd like to see you try. Get my hands on you. You're gonna turn black, you're gonna turn blue. Oh, that's some real bad news. It's not me, it's you. हेलो एवरीवन, मैं खड़ा हूँ ऑल न्यू BMW M345 X ड्राइव के बगल में और ये यहाँ पर BMW ने फाइनली इंडिया में लॉन्च कर दी है। क्या डिटेल्स हैं इसके डिजाइन, इसके एक्सटीरियर, इसके इंटीरियर को लेकर, क्या फीचर्स दिए गए हैं, परफॉर्मेंस के आंकड़े क्या है, सभी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो डिजाइन की बात करें इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर तो फ्रंट में वही स्पोर्टी डिजाइन लैंग्वेज इस M340i में देखने को मिल रही है। ग्रिल में किडनी ग्रिल यहाँ देखने को मिल रहा है विद ग्लॉस बैक एलिमेंट्स एंड LED हेडलाइट्स हैं विद ब्लू एक्सेंट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं इसकी हेडलाइट्स में। इसके अलावा बम्पर में जो है वो भी ग्लॉसी ब्लैक का इस्तेमाल करा गया है। Big development now in Justice for Anjali campaign. The Delhi police has registered a case against the accused in the Kanjhawala case by invoking charges of murder under section 302 of the IPC. So far they've been charged for culpable homicide not amounting to murder under section 304 of the Indian Penal Code. Now of course there's been a revisit and murder charges have now been invoked against the accused in this particular case. Let me go across to Priyank for all the updates. Priyank, this is a development that we reported on earlier. It's now been confirmed. Tell us about why the police now believes this is a willful, active case of murder. That this case has seen twists and turns. In this case, the case was filed under section 304A, which is a bailable offence. Related to the pressure and the highlights which was brought in picture during the course of investigation, Delhi police added section 304, which was a non-bailable section. And now, after a thorough investigation in the case and after gathering all those CCTV footage and witnesses who saw these suspects getting down and looking into the rear side of the vehicle where they spotted that there was someone who was stuck, but still they preferred to drive away the vehicle, which led to the death of the victim. That's why the legal opinion was sought after the recommendation from. And now Section 302 murder.
charges have been added against the accused. Absolutely. Thanks a lot for taking our viewers through that very important. We'll slip into a short break now, but on the other side, is it the end game now for the alleged aid of Robert Vadra? Is time now running out for Sanjay Bhandari, the alleged arms dealer? Exclusive details coming up on the other side. Stay tuned. Let's get it started, here you know it's game time. Ain't no excuses tolerated while you can't grind. It's like you're on the job, you know that team. Hello everyone, ये है बजाज की नई पल्सर P150. इन केस यू वंडरिंग 150 ऑलरेडी मौजूद है, तो इस P वर्जन को लाने का कारण क्या है, मतलब क्या है? सो कारण बहुत सारे हैं, डिज़ाइन को लेकर, फीचर्स को लेकर और कुछ हद तक परफॉर्मेंस को लेकर भी इस P वर्जन में बदलाव देखने को मिलते हैं. तो क्या है वो सारे बदलाव इस नई पल्सर P150 में, उन सभी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं इस रिव्यू के अंदर. और रिव्यू के एंड में बात करेंगे 3 धांसू और 3 नॉट धांसू एलिमेंट्स मुझे क्या लगते हैं इस बजाज पल्सर P150 के बारे में. अब डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर जो नयापन देखने को मिल रहा है, स्पेशली ओवरऑल 150 जो पल्सर है उसके मुकाबले इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन पूरी आपको ये P150 तक देखने को मिलेगी, लेकिन आपको ओवरऑल जो एसेंस है डिज़ाइन का वो इसमें N160 वाला देखने को मिलने वाला है. फ्रंट हालांकि अलग है यहाँ पे, लेकिन अब इसमें P150 में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं एंड इसमें DRLs भी यहाँ पर इसमें देखने को मिलते हैं. अग्रेसिव, स्पोर्टी एंड शार्प एलिमेंट्स इसके डिज़ाइन में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं. एंड साइड प्रोफाइल जो ओवरऑल है वो आपको N160 वाला ही झलक थ्रू आउट इसके साइड प्रोफाइल में देखने को मिलने वाला है. टैंक से लेकर इसके रियर पैनल्स यहाँ तक जो जाते हैं तो ओवरऑल वो लुक कुछ वैसा ही है, लेकिन अग्रेसिव और शार्प काफ़ी ये इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन पहले के मुकाबले लग रही है. देन पल्सर की बड़ी सी ब्रांडिंग यहाँ दी गई है एंड यहाँ काउल अलग से देखने को मिल रहा है टैंक पे. एंड देयर इज़ बेली पैन जो यहाँ पे नीचे दिया गया है, जो बॉडी कलर के हिसाब से दिया गया है. एंड P150 की ब्रांडिंग यहाँ पर इसमें देखने को मिल रही है. सीट जो है इसमें स्प्लिट सीट्स आती हैं. इसमें 2 वेरिएंट हैं, SD और TD. एंड जो इसका स्टार्टिंग वेरिएंट है SD उसमें सिंगल सीट है. इसमें जो है जो टॉप वेरिएंट है इसका उसमें TD सीट दी गई है. दोनों वेरिएंट में जो अंतर हैं कुछ मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से हैं. एक तो सीट का हो गया, दूसरा ये जो वर्जन है इसमें क्लिप ऑन हैंडल बार्स आते हैं थोड़ा स्पोर्टी स्टांस के लिए, लेकिन जो SD वर्जन है उसमें जो है सिंगल फ्रेम दिया गया है हैंडल बार का, तो वो थोड़ा अपराइट पोजिशनिंग के साथ उसका स्टांस रखा गया है. एंड उसके अलावा जो ब्रेक्स हैं, डिस्क ब्रेक्स हैं, इसमें जो है ड्यूअल डिस्क ब्रेक मिलती हैं एंड दूसरे वेरिएंट में सिंगल डिस्क ब्रेक दी गई है. सिंगल चैनल ABS दोनों ही वेरिएंट में मिलता है, उसमें कोई कटौती नहीं करी गई है. एंड ये कुछ चेंजेस यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ बोथ वेरिएंट्स इन दोनों P150 के दोनों वर्जन्स में देखने को मिलते हैं. इसके अलावा रियर में भी टेल लाइट जो है LED इस्तेमाल करी गई है, हालांकि इंडिकेटर्स आगे पीछे हेलोजन बल्ब का इस्तेमाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है. सो स्टांस स्पोर्टी, अग्रेसिव पहले के मुकाबले, पल्सर 150 के मुकाबले यहाँ पर देखने में ज़रूर लग रहा है. एंड येस ओवरऑल डिज़ाइन भी पहले से बेहतर ज़रूर इसका देखने में लग रहा है. इसके अलावा यहाँ पर एक USB चार्जिंग पॉइंट इसमें दिया गया है. हैंडल बार में लेफ्ट साइड में यहाँ पे हाई बीम, लो बीम, पास स्विच, इंडिकेटर एंड हॉर्न स्विच. एंड राइट साइड में इंजन किल स्विच, इग्निशन स्विच यहाँ पर देखने को मिल रहा है. एंड इस P150 में जो एग्जॉस्ट टेल है वो अंडर बेली दिया गया है, बजाय एक्सपोज एग्जॉस्ट टेल जो होता है उसके बजाय यहाँ पर इसकी अंडर बेली में ये एग्जॉस्ट टेल देखने को मिलता है इस P150 में.
एंड जो इसका डिस्प्ले है वो भी पल्सर 150 के मुकाबले अलग यहाँ देखने को मिलने वाला है। एनालॉग प्लस डिजिटल का मिक्सचर यहाँ देखने को मिल रहा है एंड स्पीडोमीटर इसका एनालॉग दिया गया है एंड डिजिटल में जो इन्फॉर्मेशन है गियर इंडिकेटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज, टाइम, टेम्परेचर, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसके डिजिटल कंसोल में देखने को मिल रहा है। ABS की लाइट एंड इंजन लाइट, बैटरी लाइट, साइड स्टैंड इंडिकेटर भी यहाँ पे इसमें दिया गया है। तो ये कुछ मामला यहाँ पे इस बजाज की नई पल्सर P150 के डिज़ाइन और कुछ फीचर्स में देखने को मिलता है जो पल्सर 150 में देखने को नहीं मिलते हैं। यस, एक और जो एडिशनल चीज़ मैं बताना भूल गया, जो कंपैरिजन दोनों वेरिएंट्स में है, टायर के साइज़ का भी फ़र्क दोनों में देखने को मिलता है। इसमें जो है 17 इंच 90 सेक्शन फ्रंट में दिया गया है एंड रियर में जो टायर दिया गया है वो है 17 इंच 110 सेक्शन का। जो दूसरा वेरिएंट है उसमें 100 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है रियर में। In terms of design, overall feel, in terms of features, पल्सर 150 के मुकाबले ये काफ़ी नई, बदली हुई और फ्रेश ज़रूर देखने में लगती है। हालांकि बजाज का कहना है कि 150 पल्सर ऑलरेडी बिकती रहेगी और साथ ही साथ इसको भी बेचा जाएगा। मे बी लॉन्ग टर्म में उसको बंद कर दिया जाए, देन इसको ही कंटिन्यू आगे रखा जाए अगर इसकी सेल्स अच्छी देखने को मिलती हैं। अब इसमें जो इंजन दिया गया है 150 सीसी का कंपेयर टू पल्सर 150, इस P150 में इंजन में भी थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं एंड जो इसका फ्रेम है वो भी बदला हुआ पल्सर 150 के मुकाबले देखने को मिलता है। तो राइड क्वालिटी, हैंडलिंग, परफॉर्मेंस कैसी इस नई बजाज। Welcome back. Here's the top 50 headlines at the top of this hour at 6 o'clock. Days after Home Minister Amit Shah declared the date for the inauguration for the Bhavya Ram Mandir, BJP lauds Prime Minister Modi for the construction of the Ram Mandir. This was during its national executive meeting in the national capital. Ahead of the 2024 elections, BJP puts faith on JP Nadda once again. The party extends Mr. Nadda's tenure as BJP president by another year. Amit Shah lauds Nadda's role, says the party won significant elections under his leadership. Amid the BJP's national executive meet, Jairam Ramesh of the Congress launches a scathing attack on the BJP and Prime Minister Modi, calling the BJP a government of meaningless slogans and one-liners. Accusing the opposition of running a negative campaign to damage the Prime Minister personally, the BJP in its political resolution proposed at the two-day national executive meeting said that issues were negated by the legal response of the Supreme Court. Another case slapped against Bihar Education Minister Mr. Chandrasekhar for hurting Hindu sentiments. The case has been registered in the Ada Civil Court in Bhojpur district. BJP questions the silence of top RJD leaders, including Tejaswi Yadav, on Bihar Minister Chandrasekhar's comments. The spokesperson of the party, which is the BJP, has said that Mr. Chandrasekhar has gone scot-free in the name of secularism. Nupur Sharma was made a victim by these left liberal parties. Bihar Chief Minister breaks silence over the remarks of his Education Minister's comments on the Ramcharitramanas, says that his government respects all religions and advocates for the freedom for all to practice their faith. Amid tussle with the Lieutenant Governor over the teachers' trip to Finland, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal launches an explosive attack on the Delhi LG, says that Mr. Saxena deliberately scuttled the teachers' trip as he is against providing quality education to the poor. Delhi Assembly witnesses another stormy day as the BJP MLAs were physically evicted from the House today after the Speaker suspended these BJP MLAs. The Speaker then justified his action, saying that he can disallow them just like the LG has disallowed the UP. After a propaganda machine, which is the Indian American Muslim Council, spewed venom against UP Chief Minister Yogi Adityanath, the UP Minority Affairs Minister has hit back, denouncing these biased remarks, calling the statements divisive. A deeper conspiracy to target Hindus in India unravels. After the arrest of 2 terrorists, the police now look out for 4 others, suspecting the involvement of as many as 8 to 10 people in total. Massive security breach at Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra, which was underway in Punjab, as a man rushed to hug Rahul Gandhi. Now, the IG and the police there have confirmed this incident. Rahul Gandhi has called it just another attempt at one of the party supporters seeking to embrace him, in another war of words now brewing between Rahul Gandhi's security detail and the Yatra at the time that it heads to Jammu and Kashmir.
Times now accesses full statement given by Daud Ibrahim's nephew to the National Investigation Agency, exposing how Daud is flourishing in a defense area in Karachi. He's even married for a second time, this time to a woman of Pathan origin. India has welcomed the decision on the part of the United Nations Security Council's ISIL and Al-Qaeda Sanctions Committee to list Lashkar-e-Toiba terrorist Abdul Rahman Makki, who also happens to be the brother-in-law of Hafiz Mohammed Saeed, as a global terrorist. Makki is accused of raising funds for the Lashkar-e-Toiba. As opposition rushes to slam the luxury cruise Ganga Vilas amid rumours of a snag, the shipping ministry has now intervened and busted what they call a piece of fake news, saying that the cruise has not been stuck. The tourists on board simply took a scheduled halt. Big win for forces in Jammu and Kashmir. 2 Lashkar-e-Toiba terrorists were killed by our armed forces and the Budgam police in an encounter that took place near a court complex in Budgam. Ashutosh, one of the accused in Delhi's hit and drag case, has been granted bail by a Rohini court on a bail bond of Rs 50,000 and also a surety of the same amount. The court has also asked Ashutosh to not leave the national capital without prior permission. The Allahabad High Court has upheld a Sultanpur court's order rejecting Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's discharge plea in connection with a 2014 case for allegedly saying that those who believe in Khuda won't be pardoned by Khuda if they vote for the BJP. Reeling under severe economic crisis, desperate Pakistan begs India for peace. Pakistan Prime Minister Mr. Shahbaz Sharif has admitted that they've learnt a lesson, but moments later, a red-faced Pakistan backpedaled, saying that no chance of peace can prevail until Article 370 has been restored. Another Hindu temple, moving on to other news, another Hindu temple has been vandalized in Melbourne in Australia, allegedly by Khalistani groups. The walls of the iconic temple was reportedly smeared with anti-Hindu graffiti. This attack comes days within a week of a similar attack that took place in the Mills Park area in Australia. Shocking video emerges of a man being dragged on the streets of Bengaluru by a biker. The biker who crashed into a car tried to flee from the spot, but the driver then tried to hold on to him when he began to drag him and flee the spot. In a big win for India, UK Home Secretary Suella Braverman has endorsed the extradition of fugitive alleged arms dealer and proclaimed offender Sanjay Bhandari. Will it now be endgame for Vadra's alleged aide, Mr. Bhandari? Times now confronted Mr. Robert Vadra on the extradition of Mr. Bhandari. He refused to answer questions, went away in a car. After Mehbooba Mufti, now Mamata Banerjee has raised an alarm over Hindu pilgrimages invoking Joshimath. Mehbooba Mufti had said that Amarnath is going the Joshimath way. Mamata Banerjee spoke about Raniganj in West Bengal. और भविष्य की राह दिखाने वाला था। सबसे महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने जो कही वो ये थी कि भारत के जीवन का सर्वोत्तम काल आ रहा है, हम सामने देख रहे हैं। ऐसे समय हम लोग मेहनत में पीछे न रहे, प्रयत्नों की पराकाष्ठा करें, अपने जीवन का क्षण क्षण और अपने शरीर का कण कण हम भारत की इस विकास गाथा में लगाए और भारत के इस सर्वोत्तम काल के साक्षी हम लोग बन सकते हैं। इस प्रकार की एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही और साथ साथ ये भी कहा कि इस अमृत काल को कर्तव्य काल में परिवर्तित करें, तभी हम अपने देश को तेजी के साथ आगे ले जा सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रकार से ये बताया
कि भारतीय जनता पार्टी अब केवल राजनैतिक आंदोलन भर नहीं है, तो उसका रूपांतरण एक सामाजिक आंदोलन में हुआ है, जो समाज के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए काम करने वाला, कार्य करने वाला उपकरण इस रूप से आज कार्य कर रही है। और उसी अनुरूप हमारे कार्यकर्ताओं ने भी काम करना चाहिए। साथ ही में उन्होंने कुछ कार्यक्रम भी हम लोगों को विशेष रूप से करने को कहा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मोर्चों के कार्यक्रम बॉर्डर विलेजेस के साथ हमारा संपर्क ज़्यादा बने, उनका मेन स्ट्रीमिंग ये हम लोग कर पाए और वहाँ पर हमारी एक्टिविटी बढ़े, ताकि हमारा संपर्क सूत्र भी वहाँ बने और हमारी विकास की योजनाएं भी बहुत तक पहुँचे। उसी प्रकार से आकांक्षी जिलों के विकास में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, जहाँ पर हम लोग अगर माल न्यूट्रिशन से लड़ाई कर रहे हैं, तो क्यों ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अपने ओर से वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा कार्य चलाए कि जहाँ से न्यूट्रिशन मिशन को एक मदद हो। आकांक्षी जिलों में जो कार्य चल रहे हैं वो कार्य गति से हो, इस पर हम लोग ध्यान दें। उसमें कहीं कहीं गड़बड़ नहीं हो रही है, इसकी ओर हम ध्यान दें। ये बात भी उन्होंने हम सभी को बताई है। इसके साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत इस संकल्प को दोहराते हुए हमारे सारे राज्य एक दूसरे के साथ समन्वय करें, एक दूसरे के भाषा को, कल्चर को हम किस प्रकार से अपनाएं, किस प्रकार से उसके साथ हम लोग एक भावनात्मक रूप से जुड़े, इसके भी कार्यक्रम हो। जिस प्रकार से काशी में तमिल संगमम हुआ, उसी प्रकार से हम लोग अलग अलग भाषाओं को साथ में लेकर इस भारत को एक भारत के रूप में कैसे तैयार करें, ये भी बात उन्होंने हम सबके सामने रखी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि आज जैसे हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से विशेष रूप से जेंडर डिस्पैरिटी को दूर करने का प्रयास किया, और जिस प्रकार से उस बेटी को बचाने की कोशिश की जो बेटी समाज की कुरीतियों के कारण गर्भ में ही मारी जा रही थी, उन्होंने कहा इसी प्रकार से आज हमारी धरती माता की पुकार को भी हमें सुनना है। जिस प्रकार से हम लोग केमिकल्स का, फर्टिलाइजर्स का अनन्वित उपयोग करते हुए हमारी धरती माता को प्रदूषित कर रहे हैं, जिस प्रकार से आज इस प्रदूषण के कारण क्लाइमेट चेंज की विभीषिकाओं से, जलवायु परिवर्तन की विभीषिकाओं से हमें जूझना पड़ रहा है, हमको धरती माता की पुकार सुननी होगी और धरती माता की इस पुकार को सुनते हुए, चाहे वो प्राकृतिक खेती हो या एनर्जी ट्रांजिशन हो, इन सारे विषयों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। और इसमें हम किसानों को किस प्रकार से प्रेरित कर पाए, किस प्रकार से उनको मदद कर पाए, इसको एक मिशन के रूप में हम कैसे ले पाए,
ताकि जलवायु परिवर्तन में और उसके खेती किसानी पर होने वाले परिणाम और उससे धरती माता पर होने वाले परिणाम, इसको हम कैसे दूर करें, इसके ऊपर भी हम लोग कार्य करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि विशेष रूप से हम लोग 18 से 25 इस आयु की जो हमारी तरुणाई है, इस तरुणाई ने भारत के राजनीतिक इतिहास को देखा नहीं है। उन्हें ये पता नहीं है कि भारत में पिछली सरकारों में किस प्रकार से अनाचार, दुराचार और भ्रष्टाचार देखा गया, किस प्रकार का कुशासन था और कहां भारत आज चलते हुए आया है और किस प्रकार से हम सुशासन की ओर जा रहे हैं। इसलिए 18 से 25 इस आयु के जो हमारे युवा है, इनमें भी जागृति तैयार करना, इनको भी लोकतंत्र के मूल्यों के साथ जोड़ने की कोशिश करना और साथ साथ किस प्रकार से के कुशासन से हम सुशासन की ओर आए हैं, ये बताकर उनको सुशासन के साथ जोड़ना और सुशासन का महत्व क्या है, सुशासन से देश कैसे परिवर्तित होता है, ये सारी बातें उन तक पहुंचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में करना है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भाजपा जोड़ो अभियान चलाएगी, जिसमें सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का प्रयास हम करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने एक बात बहुत स्पष्टता से बताई कि हम लोगों को संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी अंगों के साथ अपना रिश्ता जोड़ना है। आज भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों तक पहुंची है, लेकिन कहीं पर अगर कोई कमी है भी दूर करना होगा। और साथ साथ ये भी संदेशा उन्होंने दिया कि ये सारी चीज़ें करते हुए केवल वोट की चिंता मत कीजिए, वोट के लिए ये सारी चीज़ें मत कीजिए, हमें देश और समाज को बदलना है, ये हमारा कर्तव्य है। कोई वोट दे या न दे, अगर हम इस सामाजिक काम को आगे करते जाएंगे, लोगों को जोड़ते जाएंगे, तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। इसलिए कोरी राजनीति का विचार न करते हुए हम समाज नीति को लेकर किस प्रकार से अपने देश के इस अमृत काल को नए रूप से परिभाषित कर पाए, इसकी ओर भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा ध्यान दे। एक और चीज़ प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के हम सभी को बताई है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें बड़े पैमाने पर सदस्यता होती है और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से यहाँ सभी का चयन होता है, लेकिन हम लोग इन सदस्यों का सम्मेलन नहीं करते। और इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ये सूचना की है कि जो हमारे प्राथमिक सदस्य हैं, जो हमारे प्राइमरी मेंबर्स हैं, ये प्राइमरी मेंबर्स का भी हम लोग एक सम्मेलन करें, हर डिस्ट्रिक्ट में वो सम्मेलन करें और उसकी भी रचना आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी करेगी। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि आज का भाषण ये किसी राजनीतिक नेता का भाषण नहीं था, किसी पॉलिटिकल लीडर का भाषण नहीं था, एक स्टेट्समैन का भाषण था, जिसमें पार्टी से भी ऊपर देश और देश के लिए पार्टी, इस प्रकार की संकल्पना हमारे सामने प्रधानमंत्री जी ने रखी है। और मेरा विश्वास है कि जो मार्ग प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है उस पर भारतीय जनता पार्टी चलेगी और इन सारे संकल्पों को पूरा करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो संकल्प करता है वही इतिहास रचता है।
और भारतीय जनता पार्टी को संकल्प भी करना है और भारत के लिए इतिहास भी रचना है। कोई सवाल हो? न्यूज़ 24 से गौरव। सर, लगभग 1 घंटे का जैसा कि आपने बताया उनका भाषण था। 9 राज्यों में चुनाव है, फिर अगले साल फाइनल है। इसको लेकर कुछ उन्होंने कहा चुनाव की तैयारियों में जुड़ने के लिए? देखिए, सब लोगों को यही लगता था कि चूंकि सामने चुनाव है तो ये भाषण चुनाव का होगा, इसलिए मैंने स्पष्ट रूप से कहा ये राजनेता का भाषण नहीं था, ये स्टेट्समैन का भाषण था। और इसलिए चुनाव को लेकर कोई बहुत बड़ी बात उन्होंने अपने भाषण में नहीं कही। हाँ, ये जरूर कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कीजिए और हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी पहुंचे, ये प्रयास कीजिए। विकास चंद्रा, न्यूज नेशन, बोलिए। बैठक में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ जो आपने कहा कि स्टेट्समैन की तरह उन्होंने बात कही, संगठन को लेकर के भी क्या कुछ उन्होंने बातें कही, क्योंकि जिस तरीके से आगे चुनाव है और तमाम सारी चुनौती है उसको लेकर? देखिए, ये पूरी बातें संगठन के लिए ही थी। भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से अपने संगठन को देश के विकास के इस अमृत काल में जोड़े। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत एक ऐसी बात कही है कि ऐसा काल जो अभी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये शायद अगर हम लोग इस काल को अगर हमारी विकास यात्रा में परिवर्तित नहीं कर पाए तो हम पीछे छूट जाएंगे। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत इस अमृत काल को विकास काल में परिवर्तित करने में लगाए। स्मृति काक, रामचंद्रन, हिंदुस्तान टाइम्स। सर, पिछली बार पीएम ने बोला था कि देयर शुड बी एन आउटरीच टुवर्ड्स द माइनॉरिटीज, स्पेशली द मार्जिनलाइज्ड माइनॉरिटीज अमंग द मुस्लिम्स। उसका कोई रिव्यू हुआ कि वो कितना हो पाया है, और डू यू गेट अ सिमिलर काइंड ऑफ अ डायरेक्टिव दिस टाइम आल्सो? देखिए, जो पिछले बार कहा था उसका एक कार्य जनता पार्टी ने तैयार किया, और प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जब तक समाज के मार्जिनलाइज्ड लोग जो है वो किसी भी समाज के हो उनको मुख्य धारा में नहीं लाएंगे, तब तक देश की विकास यात्रा अधूरी होगी। और भारतीय जनता पार्टी लगातार ये प्रयास भी कर रहा है। विकास भदौरिया, एबीपी। सर, आपने कहा, प्रधानमंत्री जी ने बोला कि धरती माँ की पुकार सुनना भी जरूरी है। उन्होंने किस कंटेक्स्ट में ये बोला, क्या कोई एग्जाम्पल दिया अपने भाषण के दौरान? जी देखिए, उन्होंने ये कहा कि जिस समय हमारे यहाँ पर एक जेंडर डिस्पैरिटी तैयार हुई थी, उस समय हम लोग ये कहते थे कि जो पेट में बच्चियाँ हैं उनकी पुकार सुनिए, उनको जन्म लेना है, उनको इस धरती पर कुछ करना है। वो जैसी पुकार हम लोगों ने सुनी, आज उसी प्रकार की एक पुकार धरती माता कर रही है कि मैंने आपको सब दिया, मैंने आपको पेड़ दिए, मैंने आपको अनाज दिया, लेकिन आज मेरे साथ जो व्यवहार हो रहा है ये व्यवहार एक प्रकार से विनाश की ओर ले जा रहा है, और ये धरती माता की जो पुकार है इसको हमको सुनना होगा। संतोष पाठक। देवेंद्र जी, आपने कहा कि कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि संवेदनशीलता के साथ समाज के सारे तबकों के साथ रिश्ता कायम करना है, तो क्या कुछ खास तबकों का उन्होंने नाम भी लिया, जिक्र भी किया? नहीं, देखिए, समाज के सभी तबकों का अर्थ ये होता है कि सारे के सारे, उसमें पर्टिकुलर ये तबका या वो तबका नहीं, समाज के जितने पिछड़े हैं ये सभी को हम लोग किस प्रकार से मुख्य धारा में ला पाए, इसका प्रयास हमको करना है। द ट्रिब्यून सर। Devendra ji, I am Aditi Tandon from the Tribune. I just wanted to ask that opposition's negative propaganda and campaign against the Prime Minister featured in the political resolution. Did the Prime Minister comment on the opposition's role in Amrit Kal? प्रधानमंत्री जी ने केवल इतना ही कहा कि हम ये अपेक्षा करते हैं कि इस यात्रा में सभी लोग अपनी अपनी भूमिका निभाए, और उन्होंने ये भी कहा कि हम कभी भी अपोजिशन को कमज़ोर नहीं समझते, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी ने अब ये ताकत तैयार की है कि हम अपने भरोसे ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की लड़ाई तेजी से आगे ले जा सकते हैं। चित्रा त्रिपाठी, आज तक। देवेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि आप प्रधानमंत्री की ओर से ये भी कहा गया कि चुनाव में सिर्फ 400 दिन तकरीबन बाकी हैं, ऐसे में सभी समाज के तबकों तक जाएं, और क्या पसमानदा और बोरा मुसलमानों का भी जिक्र करते हुए स्पेसिफिक ये कहा गया कि वो आपको वोट करें या ना करें, लेकिन उनका साथ और उन पर विश्वास जमाने की पूरी कोशिश बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से की जानी चाहिए। देखिए, ये जरूर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चुनाव में 400 दिन है, तो हमारे इस कार्यकाल की सेवा के लिए हमारे पास 400 दिन शेष है। ये 400 दिन हम मतदाताओं की पूरी सेवा करें। उन्होंने स्पेसिफिक ये समाज या वो समाज ऐसा न कहते हुए सारे समाज, जितने मार्जिनलाइज समाज है, सबका उल्लेख किया है। सुजीत ठाकुर, देवेंद्र जी, आपने कहा कि 18 से 25 आयु वर्ग वाले जो हैं, प्रधानमंत्री ने कहा उन्होंने देखा नहीं पीछे जो भी अच्छी बुरी बातें जो भी रही हूँ, तो क्या वो जो निगेटिविटी था उसके बारे में बताएंगे कि हम कैसे अच्छे शासन की तरफ जा रहे हैं, तो उसको भूलिए, क्या स्पेसिफिक क्या था वो चीज़? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से ये बात ऐसी है कि ये जो 18 से 25 के जो लोग हैं, इन्होंने पुराने सरकारों में जो कुशासन चला उसको उन्होंने देखा नहीं है। क्योंकि समझ लीजिए 2013-14 में उनकी उम्र 10 साल की 12 साल की रही होगी, तो सुशासन और कुशासन का अंतर क्या है? जब हम लोकतंत्र में काम करते हैं तो लोकतंत्र में सुशासन से किस प्रकार से प्रगति होती है, इसका एक कंपैरेटिव इस प्रकार का एनालिसिस करते हुए अगर हम उनके पास जाएंगे तो उनका लोकतंत्र में विश्वास भी बढ़ेगा और साथ साथ कुशासन और सुशासन का अंतर भी उनको समझेगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। Okay, so that's the message as has been conveyed by Devendra Fadnavis, the Prime Minister at the NDMC Convention Centre, sending the message loud and clear to his party men of how the agenda is Samaj Niti over Rajniti. Sabka Vikas message having been sent out by the Prime Minister, being delivered by Devendra Fadnavis, Deputy Chief Minister in Maharashtra and BJP leader who was also part of the mega BJP meet that took place earlier today. The Prime Minister has left the venue, but this is the message being sent out today, that it is working for the society above all. It is working for the people above politics. That's the message sent out by the Prime Minister this evening as he addressed his party men. Let me go across to Amit Kumar joining us with more details. Amit, बहुत बड़ा मैसेज संदेश भेजा गया है प्रधानमंत्री की ओर से, हमें जल्दी से जानकारी दीजिए जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा उसके बारे में। देखिए, सबसे बड़ी बात की उन्होंने 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी बात कही कि देखिए हमको समाज में सभी तबके को जोड़कर चलना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ चुनाव को देखना होगा कि चुनाव के मद्देनज़र हम देखें। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जो बातें कही वो तो कही, लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट कुछ बातें हैं जो कि शायद यहाँ पर वो बातें नहीं की, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं कही। सूत्रों के हवाले से प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि सिर्फ 400 दिन के वक्त बचे हैं जब लोकसभा चुनाव होना है 2024 में। ऐसे में सबसे ज़रूरी है कि आप जो आम जनता है उनको जिम्मेदारी बनाए, उनको ये बताए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताए कि कैसे उन्होंने वोट किया, तब हमने बड़े फैसले किए। आप जनता के बीच जाएं तो जनता को बताए कि सर्जिकल स्ट्राइक क्यों हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि जनता ने मोदी सरकार को वोट किया था। कोविड में हमने एक बड़ी लड़ाई लड़ी, वैक्सीनेशन हमने घर घर पहुंचाने की कोशिश की। ये क्यों हुआ? क्योंकि मोदी सरकार को जनता ने वोट करके लाया था। तो ऐसे में जनता का की जो जिम्मेदारी होगी वो उसके बताया जाए। उन्होंने यहाँ तक बताया कि राजस्थान और जो मध्य प्रदेश जो छत्तीसगढ़ चुनाव है वहाँ पर आप देखिए ओवर कॉन्फिडेंस कितना मुश्किल होता है। प्रधानमंत्री ने एग्जाम्पल दिया कि जो दिग्विजय सिंह की सरकार थी, जब तीसरी बार वो चुनाव लड़ने जा रही थी तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था, लेकिन हमने आसानी से लगा था कि बीजेपी चुनाव जीतेगी, लेकिन बीजेपी चुनाव हार गई क्योंकि वहाँ एंटी इनकम्बेंसी का फायदा हम नहीं उठा पाए। बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस थी, इसीलिए उन्होंने दिया कि ज़रूरी है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस की बजाय आम जनता के बीच जाएं और सिर्फ ये सोचकर ना जाएं कि नरेंद्र मोदी आएंगे हम चुनाव जीत जाएंगे, बल्कि
चुनाव जीतने के लिए काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने ये कहा कि सेवा बहुत ज़रूरी है, लोगों से संपर्क बहुत ज़रूरी है, लोगों को जो ऊंचे पद पर है उन्हें संवेदनशील होना चाहिए। उन्होंने कहा कि तमाम जो सरकार है उसकी जो कामकाज है वो कैसे जनता तक पहुँचे, जनता के बीच एक मैसेजिंग होनी चाहिए कि ये जो सरकार है ये गरीबों के लिए है, लोगों के हितों के लिए है। मुझे लगता है कई ऐसी बातें उन्होंने ये कहा कि जो बातें मुझे लगता है कि ये ज़रूरी ये बात जानना है जो कि देवेंद्र फडणवीस ने नहीं बताई, जो कि संगठन के लिए, संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए नरेंद्र मोदी ने अंदर कहा। उन्होंने कहा कि तमाम कार्यकर्ताओं को ज़रूरी है कि वो जाकर मस्जिद जाएं, पसमंदा वालों से मिले, समाज के अलग अलग तबकों से मिले, ताकि उनके बीच उनकी पहचान हो, उनकी जान पहचान हो। चुनाव को लेकर बोला कि 400 दिन की बातें हैं, 400 दिन के लिए पूरी ताकत झोंक दीजिए। तो ये ऐसी बातें हैं जो प्रधानमंत्री ने यहाँ पर, क्योंकि ये कार्यकारिणी की बैठक में आखिरी सब जो भाषण होता है एक तरह का मार्गदर्शन भाषण होता है प्रधानमंत्री मोदी का, और उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सबसे ज़रूरी जो चीज़ें होती है वो जनसंपर्क होता है, मैन टू मैन जो कनेक्शन होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, और उसी पर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जी अमित, सर्वोत्तम काल को देश सर्वोत्तम काल की ओर जा रहा है भाजपा की वजह से। ये संदेश भी आज भेजा गया है कि अमृत काल को विकास काल में बदलने की जरूरत है और भाजपा ही ये कर सकती है। ये संदेश आज दिया गया है, और आप जो बता रहे हैं हमें ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 400 दिन की जो बात की गई है यही बात पिछले 2 दिन से दोहराई जा रही है कि इस मीटिंग में प्रधानमंत्री पूरी पार्टी के लिए जो इलेक्शन से पहले एजेंडा है वो सेट करेंगे, पर उन्होंने राजनीति पे फोकस ना करके लोगों के इश्यूज पे कैसे एज ए सोसाइटी हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस है और उन्हें कैसे एड्रेस कर सकते हैं, इस पे फोकस रखा अपना। जी हाँ, देखिए साफ तौर पे युवा पीढ़ी ने जो पिछले सरकारों में जो कामकाज हुआ, कैसे युवा पीढ़ी को चीज़ें मिली है, कैसे सबसे बड़ा बात कि पहले की जो सरकारों का जो कुशासन था उसको कैसे मोदी सरकार ने और भाजपा की सरकारों ने सुशासन में बदला है, उसकी बात की है। उन्होंने कहा कि धरती माँ की पुकार है कि हमें केमिकल उपयोग से बचना चाहिए, कि तमाम जो चीज़ें हो रही है किस तरह से उसका जो हम विकास के नाम पर किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उसको देखने की जरूरत है। लेकिन चुनाव के मोड में उन्होंने ये कहा कि जो सभी समाज को साथ जोड़ने की जो बात बार बार कही जा रही है प्रधानमंत्री की तरफ से, उन्होंने साफ कहा कि इसे चुनाव से मत जोड़िए, सिर्फ और चुनाव को मत देखिए, लेकिन हाँ ये ज़रूरी है कि समाज का वो हर तबका जिसको लगता है कि हम शायद उस मेन स्ट्रीम के पार्टी से अलग हैं, उसके पास जाने की ज़रूरत है, चाहे वो पसमानदा हो, चाहे वो मुसलमान हो या चर्च हो या जो भी लोग हों, उनके पास जाइए। प्रधानमंत्री ने बाकायदा ये कहा कि आप एक दिन फिक्स कीजिए और आप किसी दिन चर्च में चले जाइए, लोगों से मिलिए, बात कीजिए, उनको समझाइए। इसी तरह से उन्होंने 400 दिन की बात कही कि 400 दिन में अगर आप चुनाव के दौरान जो आम लोगों को अगर ये बात कन्विंस करने में सफल होते हैं कि कैसे आपकी वजह से ये मोदी सरकार ने जो बड़े फैसले लिए हैं, मोदी सरकार ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है, मोदी सरकार ने जो एयर स्ट्राइक की है, मोदी सरकार ने किस तरह से वैक्सीनेशन पहुंचाया घर घर, उसके पीछे आप हैं, ये आम जनता है जिन्होंने वोट दिया था, वोट देकर सत्ता में लाए थे। तो एक सर्वांगीण विकास की बात, सबके डेवलपमेंट की बात, सबको साथ लेकर चलने की बात प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। इसीलिए इसे पॉलिटिकल से ज्यादा एक सोशल और उस तरह से भाषण कहा जा रहा है। और ये 400 दिन की बात जो करी गई है, अमित, उससे पहले अपने दर्शकों को याद दिला देते हैं कि 9 राज्यों में भी इलेक्शंस होंगे इसी साल। तो ये बहुत बहुत जरूरी है जो पार्टी को आज प्रधानमंत्री की ओर से संदेश दिया गया है कि वो कह रहे हैं कि संकल्प भी करना है पर इतिहास भी रचना है। एंड लाइक देवेंद्र फडणवीस पुट इट, he spoke like a statesman today and not like a politician. Thank you, Amit, for joining us with those details. Well, hi there. Warm welcome. You're watching Blueprint Explosive Exclusive with me, Nadda. Well, it is a country which has promised to bleed India through 1,000 cuts. It's a country that has promised a 1,000-year war against India. And today it's a country that is broke, bruised and battered. It is begging the same India
to now come to the talks table. In fact, in an interview with a Dubai-based Arabic channel, Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif has now said that Pakistan has learned its lesson from the 3 wars that it has fought with India and now wants to have serious and sincere talks with India. Of course, this desperate appeal for talks comes at a time when the country is fighting skyrocketing inflation and protests by the citizens who have hit the streets against the army and the civilian government. Now the beleaguered Prime Minister is seeking talks with India when the reality of their predicament has hit home. Do you believe him? Well, listen in and decide. And it is up to us to live peacefully and progress, or quarrel with each other and waste time and resources. That's up to us. Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars with India, 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, to unemployment, to nations, poverty, and millions were demoted from their level of satisfaction to a low level of satisfaction. We have learned our lesson, and we want to live in peace with India, provided we are able to resolve our genuine problems. The reason for this sudden desire to talk to India was made clear by Shehbaz Sharif himself. Yesterday, the Pakistan PM admitted how amid an economic crisis in his country, he was embarrassed to ask for more loans from global community. He also reiterated that getting bailouts from countries like Saudi Arabia is not a solution, since these loans eventually have to be returned. यूएई के जो सदर हैं, मेरे भाई जनाब मोहम्मद बिन जायद, तो मैंने उनसे कहा कि आपने $2 अरब का जो कर्जा दिया है पाकिस्तान को, मेहरबानी कर उसको रोल ओवर कर दें। और मैंने फैसला किया था कि मजीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन किस्मत देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान जिन मसाइब से, मुश्किलात से गुजर रहा है, मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद कर्जा मांगूं। तो मैंने कहा कि जनाब मेरे आप बड़े भाई हैं और मुझे बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन मजबूरी है, हमारे मामलात जो माली मामलात जो हैं इस वक्त बड़े IMF की शराइत में हम जकड़े हुए हैं, अभी भी 9th रिव्यू मुकम्मल नहीं हुआ। मैंने कहा कि मसाइल आप जानते हैं, आप हमें $1 अरब और दे दें। आई फील वेरी एम्बैरेस्ड कि मैं आपसे हर दफा आता हूँ, कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। Meanwhile, widespread protests have broken out across Pakistan-occupied Kashmir over the dizzying price rise and the hardships. The people have taken to the streets against the Pakistani army and the national government, questioning why all the food and life essentials were out of reach for the common man. आटा महंगा न मंजूर, न मंजूर, न मंजूर। बिजली महंगी न मंजूर, न मंजूर, न मंजूर। आटा महंगा न मंजूर, न मंजूर, न मंजूर। मुच्छा वाले, बेटा वाले, आटा महंगा, आटा महंगा, जोर हुकूमत, FIR गिराइए, आटा महंगा, बिजली महंगी, चीनी महंगी, Pakistan, which is still reeling under the after effects of the last year's floods in the country, has seen inflation skyrocket over the last few days. Onion prices, for example, rose by 501%. Diesel prices have gone up by 61% and petrol prices have shot up by 48%. In fact, the cost of rice, pulses, wheat has also surged by nearly 50% within a year. Now, such is the state of affairs that people are now accusing the government and Pakistani army of looting and beggaring the country.
Well, currently there is not a single city in Pakistani-occupied Jammu Kashmir or Pakistani-occupied Gilgit-Baltistan, for that matter, where people are not on the streets protesting, whether they are doing sit-ins, public meetings like jalsas or rallies. People are out on the streets because there is no food, there is no atta, there is no flour. And in POJK, in one day, they have increased the price of amount of wheat by 1,200 rupees. So people are fed up. Let's open this up quickly. RSN Singh joining us, author, one of India's foremost strategic affairs analysts. Raja Faisal, Pakistani journalist, also joining us. RSN Singh, are you surprised by what we are seeing in Pakistan? Yeah, you are asking me? Yes, sir. You asking me? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, yes. Look, what does it mean by Pakistan has learned, its lessons by its wars? That means it is an acknowledgement, or it's an admission that, they were the perpetrators. They are the ones who initiated those, three conventional wars, and then they must apologize to it. And the best way to atone for it is that they abandon jihadi terrorism and jihadi proxy war. Now, otherwise it will be construed that just because, they learned their lessons in conventional war, they have now, resorted to jihadi proxy war or terrorism. Now, actually, terrorism and jihadi proxy war does not constitute war in the dictionary. And let me tell you, Pranesh, that peace in the subcontinent has not been destroyed because of those three wars. Peace in the subcontinent has been destroyed by relentless jihad from Pakistan, or terrorism from jihad. And as far as sincere and serious talks on Kashmir is concerned, yes, right. The current dispensation in the country, it has displayed its sincerity in removing Article 370, and it is also addressing now the issue of POJK with equal seriousness. But also, Colonel Singh, if you look at the history of Pakistan, the way every time India has tried to have some trust to go down the dialogue path, we have seen Pakistan backstab India time and again. History has taught India a lesson, and India doesn't have any reason to believe Pakistan this time around, even if they say they've learned their lessons. You are absolutely right. You are absolutely right. That is why I said that, you said that you have learned your lessons in the three wars. I mean, that they do not count this jihadi proxy war. They don't, count 26/11. They do not count Kargil amongst the war. So is it any kind of remorse or really acceptance? I don't think so. And yes, and then on the other hand, he also goes on to say that now look, we cannot waste our resources, and well, you have made us waste our resources, in creating a security infrastructure just by perpetrating terrorism. And despite that, in terms of PPP, India is the third largest economy in the world, despite that. Because based on our knowledge economy, not because of our, Let's not forget there's also, parallel terror economy that thrives in Pakistan, which is why a proxy war is on a daily basis. Even as we are talking to each other, the Pakistan's proxy war and, the soldiers of jihad, as they call terrorists, they are trying to bleed India 1,000 cut. Colonel RSN Singh, thank you for joining us. A quick break. Lots more lined up on the other side. In case
केस आप मिलेनियन वाली जनरेशन से हैं तो आपने शायद वो गाना सुना होगा, देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार। सो कुछ ऐसे अगर आप मूड में हैं तो यहाँ पे ये गिटार की स्ट्रिंग्स टाइप दी गई हैं, एग्जैक्टली स्ट्रिंग्स नहीं है बट ऐसे कुछ मूड में है तो आप इनका इस्तेमाल उस समय जरूर कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि गाड़ी कौन सी है, हाल ही में इसका लॉन्च हुआ था, ये है BYD की Atto 3 और क्या परफॉर्मेंस, क्या रेंज, क्या डिजाइन, क्या फीचर्स BYD अपने इस इलेक्ट्रिक व्हीकल में दे रहा है, उन सभी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में हमेशा की तरह बात करेंगे 3 धांसू और 3 नॉट सो धांसू एलिमेंट्स मुझे क्या लगे इस BYD Atto 3 के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं इस Atto 3 के डिजाइन वाले एस्पेक्ट से। तो फ्रंट में BYD ये कहना है ये गाड़ी का डिजाइन जो है ओवरऑल ड्रैगन इंस्पायर्ड है, चाइनीज ब्रांड है, तो कुछ वैसा ही एसेंस BYD कह रही है हमने इस गाड़ी के डिजाइन और स्टाइलिंग में देने की कोशिश करी है। हालांकि ड्रैगन इंस्पायर्ड तो मुझे फ्रंट ज्यादा नहीं लग रहा है, बट फिर भी यहाँ पे सेंटर में बड़ा सा BYD का लोगो है, क्रोम का एलिमेंट दिया गया है थ्रू आउट जो जाता है इसके फ्रंट हेडलाइट के ऊपर से सेंटर तक। एंड हेडलाइट जो है क्रिस्टल LED कॉम्बिनेशन लाइट्स यहाँ पर इसमें देखने को मिल रही है। एंड DRL देख रहे हैं, देखने में खूबसूरत ही काफी लग रहा है। इसका फ्रंट जो लाइट का सेक्शन है काफी स्लीक कॉम्पैक्ट इसका हेडलाइट का डिजाइन लग रहा है। एंड जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो भी इसके DRL में ही इंटीग्रेटेड हैं, तो यहाँ पे जब इसको टर्न इंडिकेटर ऑन होंगे तो ये DRL टर्न इंडिकेटर का काम भी करेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो फ्रंट में कुछ यहाँ पे इवेंट वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, ऑब्वियस है। एंड इसमें जो है ADAS लेवल 2 के फीचर्स देख सकते हैं आप, यहाँ सेंसर्स वगैरह, रेडार वगैरह यहाँ पे इसमें देखने को मिल रहा है। एंड 360 डिग्री कैमरा यहाँ पर इस BYD की Atto 3 में इधर दिया गया है। साइड प्रोफाइल पे आए तो यहाँ पर जो टायर्स इसमें दिए गए हैं वो हैं 18 इंच के 215 सेक्शन के टायर्स दिए गए हैं। एंड यहाँ पे जो डिजाइन है एलॉयस का ये भी थोड़ा स्पोर्टी स्टाइलिश देखने में जरूर लग रहा है। BYD का हब यहाँ पे सेंटर में दिया गया है व्हील में। एंड ओवरऑल जो यहाँ पे डिजाइन है, यहाँ पे क्लैडिंग थ्रू आउट जाती हुई आपको पीछे तक इसमें देखने को मिलेगी। BYD डिजाइन की बैजिंग यहाँ दी गई है क्रोम में। यहाँ पे जो है इसका ये चार्जिंग सॉकेट है। एंड इसका जो चार्जिंग सॉकेट है वो आप एक्सटर्नल पावर कहीं आपको देनी है, छोटा मोटा कुछ आपको कॉफी मशीन टाइप, छोटा मोटा फ्रिज आपको यहाँ पे इससे एक्टिवेट करना है, इलेक्ट्रिसिटी देनी है वहाँ पे, तो उसका इस्तेमाल इस तरह से भी करा जा सकता है। तो ये एक ऑप्शन BYD ने इस Atto 3 में दिया है। देन साइड प्रोफाइल में क्रोम का एलिमेंट थ्रू आउट इसके विंडोज के आसपास। एंड यहाँ पर थोड़ा ये सिल्वर टच इसके रूफ रेल में इधर देखने को मिल रहा है। डोर हैंडल्स जो हैं बॉडी कलर्ड है। एंड ORVM जो है इसमें जो है हीटेड का भी ऑप्शन दिया गया है, तो हीटेड ORVMs है। एंड ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग के फीचर्स ऑब्वियसली यहाँ देखने को मिलेंगे क्योंकि ADAS लेवल 2 के सेफ्टी फीचर्स इसमें दिए गए हैं। एंड नीचे डोर्स में भी थोड़ा ब्लैक और ये बॉडी कलर कॉम्बिनेशन इसके डोर्स में नीचे देखने को मिल रहा है। साइड से डिजाइन में कहूँ बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं लग रहा, बट ओवरऑल देखने में अच्छा जरूर लग रहा है। इसके अलावा रियर में आए तो रियर में यहाँ पे थोड़ा स्पॉइलर वाला फील दिया गया है इधर। एंड पियानो ब्लैक और ये बॉडी कलर ब्लू के कॉम्बिनेशन में अच्छा सेक्शन, जो इंटरेस्टिंग सेक्शन इन टर्म्स ऑफ डिजाइन मुझे लगता है वो है इसका ये टेल लाइट का डिजाइन। जो ये स्ट्रिप जा रही है इसकी टेल लाइट को जोड़ती है। अब अमूमन ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों में ये डिजाइन एलिमेंट हमें देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे इस BYD के Atto 3 में भी ये अच्छा देखने में रियर प्रोफाइल फ्रंट प्रोफाइल के मुकाबले मुझे ज्यादा बेहतर देखने में जरूर लग रहा है। क्रोम का एलिमेंट भी थोड़ा है। एंड BYD की फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता है इनकेस, तो इन्होंने बड़ा बड़ा यहाँ लिखा है बिल्ड योर ड्रीम्स। एंड इधर Atto 3 की बैजिंग है। एंड लेफ्ट साइड में जाएं तो यहाँ पर इसका EV का बैजिंग इधर दिया गया है। सेंसर्स थ्रू आउट इसमें देखने को मिलेंगे। 360 डिग्री कैमरा यहाँ पे इसमें दिया गया है। एंड बूट को ओपन करने के लिए वन टच एंड बूट ओपन इसका हो जाएगा। ओवरऑल जो स्पेस है अभी फिलहाल सेकंड रो अप है, तो ओवरऑल स्पेस जो है वो है 440 लीटर्स का। बट अगर आप सेकंड रो डाउन करते हैं तकरीबन स्पेस हो जाता है 1340 लीटर्स के आसपास इसका ओवरऑल स्पेस बन जाता है। तो ये कुछ मामला है इस BYD या बिल्ड योर ड्रीम्स की Atto 3 के एक्सटीरियर लुक्स डिजाइन का,
चलते हैं अंदर। अंदर थोड़ा फील प्रीमियम और थोड़े एक्सक्लूसिव एलिमेंट्स इस गाड़ी में देखने को मिलते हैं। क्या है वो, एक बार उसको देखते हैं। तो बैठा हूं मैं इस BYD 803 के अंदर और अंदर मामला प्रीमियम, स्पोर्टी, स्टाइलिश देखने में जरूर लग रहा है। कुछ एलिमेंट्स के नाम भी BYD ने इस 803 के अंदर ऐसे रखे हैं। अंदर जो कुछ इंटीरियर में इसके डिजाइन एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे ये डंबल स्टाइल इंस्पायर्ड इसका ये AC वेंट्स देखने को मिल रहे हैं। वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है एंड ये इसका गियर लीवर है। मोड दिए गए हैं इसमें 3